It's out of my hand, but I'm still in control. It's out of my hands. You can never take away the power of my soul. It's out of my hands, but I'm still in control. It's out of my hands. You can never take away the power of my ओह ओह माय गॉड। अरे कैमरा बंद है। चल गया गुड। बस एक चीज़ और, जस्ट अ मोमेंट। लॉग इन, स्टार्ट, लेट्स टेस्ट रेशियो यो, लेट्स टेस्ट अ डोनेशन, क्योंकि मैं देखूं आ रही है कि नहीं आ रही है। आजा, आ गई, डन। Tush donated 11 rupees. This is test donation from Dainsleif Dehya. ओके तो आज करेंगे हम हमारी सबसे फेवरेट टाइप की क्वेस्ट, डेनस्लिफ वाली क्वेस्ट। डेनस्लिफ। एक मिनट। आधे घंटे से मैं अपने स्ट्रीमिंग पीसी के साथ जूझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे गेमिंग पीसी की आवाज़ मेरे स्ट्रीमिंग पीसी में नहीं जा रही थी, जो कि होता रहता है मेरे साथ। गॉड, वन मोर टाइम। कहाँ गई? मैं सुबह उठा, मैंने सबसे पहले से खोल के इसे अपडेट कर दिया। हर बार क्या होता है कि मैं स्ट्रीम स्टार्ट करता हूँ और फिर इसे अपडेट करना स्टार्ट करता हूँ, और फिर स्टार्टिंग में बस अपडेट ही तो होती रहती है। क्या वैसे आप मेरे अबिस में हेल्प कर दोगे क्या? यार अबिस तो अकेले ही कर सकते हैं ना, अबिस तो अकेले ही होता है, उसमें तो कोऑप कर ही नहीं सकते। भाई गेंशिन ने एक दिन में 25 विशेस दे दिए। मैं भी यार बस लॉगिन करके देखना चाहता हूँ कि कैसे मिल रही हैं, है ना। मुझे भी थोड़ा गाइड करो, कहाँ से मिली। 25 मिल गई तो मेरे पास टोटल 100 के अराउंड विशेस सेव हो गई, मतलब एक 5 स्टार तो मेरा गारंटेड है। और एक दूसरी चीज़, मुझे अभी मैं ब्रेकफास्ट करते हुए एक वीडियो देख रहा था, जो जेट की स्टोरी थी ना, अभी पीछे गई है 3.4 के अंदर, वो भी पूरी नहीं की मैंने, उसका कुछ पोर्शन रह गया है, ये मैंने तब देखी है। मेरे से फ्लोर 12 नहीं हो रहा है, मुझसे भी नहीं हो रहा भाई। मेल से भी 600 प्रीमोज लो हो गए। एडवेंचर्स हैंडबुक गाइड में जाओ, क्लेम कर लो। ओके चलो अभी करता हूँ। तुम्हारे कैरेक्टर कौन से हैं किरीतो को पहले ही देखना पड़ेगा कि कितने बिल्ट हैं। उसी पे पता चलेगा कि फ्लोर 12 होगा कि नहीं होगा। ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है यार फ्लोर 12 की। मैं भी फ्लोर 12 चेंबर 1 पे अटका हुआ हूँ। लो जी, सब कुछ लाइट अप हो गया। दिया। किसका किया जाए? इसका क्रिट रेट वाली है यार, ये तो डीलू को दी जा सकती है।
ये तो डीलुक को दी जा सकती है, डीलुक और डायोना की टीम में। फर्स्ट हाफ राइडन या नाहिदा काजुहा। दिया पुल करोगे क्या? अरे यार मन तो है, लेकिन अभी मैंने अभी दिया को देखा नहीं है मैंने। अभी मैं ज़रा उसमें जाऊंगा ट्रायल के अंदर, दिया को ट्राई करूंगा। लेट्स सी हाउ शी इज, ठीक है, क्योंकि शी इज़ अ डीपीएस कैरेक्टर। मुझे इस टाइम डीपीएस की ज़रूरत है नहीं, टू बी ऑनेस्ट, ऑल्दो आई नीड अ गुड पायरो कैरेक्टर, क्योंकि मेरे पास एक पायरो कैरेक्टर की कमी है इस टाइम। सेकेंड हाफ शाओ जोंगली सुक्रोज बेनेट। नहीं वो तो तुमने टीम तो बता दी, लेकिन कितने वेल बिल्ट हैं ये देखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा वेल बिल्ट नहीं है तो मुश्किल है भाई 12th फ्लोर होना, बहुत हार्ड अबिस है। दूसरा अपना ये है क्रिट रेट पोल आर्म। यही करते हैं सबसे पहले, बाकी चीज़ें देखते हैं। ये अपना बैटल पास हो गया। ठीक है, वेट फॉर अदर कैरेक्टर, दिया इज नॉट वर्थ इट, आई सॉ द गाइड। अच्छा, C6R5 का शोकेस देखा दिया का, 30K से ज़्यादा जा ही नहीं रही। क्या बात कर रहे हो? C6R5 में दिया 36 से ज़्यादा नहीं जा रही? बड़ी शर्म की बात है यार। ये करनी पहले तो आज ये करेंगे, ये बाद में, फिर उसके बाद अबिस। पहले ज़रा दिया को ट्राई करूँगा, रुको ज़रा पहले ये देखते हैं क्या चक्कर है। कीरितो को तुम्हारे कैरेक्टर्स को देखना पड़ेगा एक बार हमें। एक मिनट ब्रो। ओके, a member of Eremites, a mercenary organization that roams the sands of Sumeru. Valiant and powerful, she enjoys great fame amongst her fellow Eremites. Okay. Beacon of the Reed Sea, R1 है इसके पास, लेवल 80 पे, ठीक है। अभी इसके स्टैट्स क्या हैं? 56, 154, ओके। टेनासिटी, एक मिनट पहले मुझे टैलेंट पढ़ने दो। ओके, नॉर्मल अटैक तो नॉर्मल अटैक हो गए। या तो सोलो ज़्यादा डैमेज देता है। F2P प्लेयर्स के लिए स्कैम है दिया। यार मुझे बड़ा दुख सा हो रहा है जान के ऐसी बात हो रही है। तो पढ़ते हैं इधर इसकी, मेरे को एक बार टैलेंट्स पढ़ने दो। ओके, Indomitable Flame. This skill will be unleashed should there be no fiery sanctum field created by Diya herself present at the time. Deals AoE pyro damage and creates a field known as Fiery Sanctum. Okay. Ranging Flame. This skill will be unleashed should a Fiery Sanctum field created by Diya herself already exists. Diya will perform a leaping attack dealing AoE pyro damage before recreating a Fiery Sanctum field at a new position. A Fiery Sanctum field created this way will inherit the remaining duration of the previous field. Okay, Ranging Flame can be used only once throughout a single Fiery Sanctum field duration. Okay, got it. Fiery Sanctum. When an opponent with a Fiery Sanctum field takes damage, the field will unleash a coordinated attack dealing AoE pyro damage to them based on Diya's attack and max HP. Okay, इसलिए tenacity दिया हुआ है 4 piece. This effect can be triggered once every 2.5 seconds. Skill attribute पे scaling देखो Deluxe से भी कम है। TTG गेम आए, हेलो आ जाओ भाई आ जाओ। किरीतो को अभी देखता हूँ, रुको। Active characters within this field have their resistance to interruption increased, and when such characters take damage, a portion of that damage will be mitigated and flow into Redmane's blood. Diya will then take this damage over 10 seconds. When the mitigated damage stored by Redmane's blood reaches or goes over a certain percentage of Diya's max HP, she will stop mitigating damage in this way. Only one Fiery Sanctum created by Diya herself can exist at a time. Skill attributes देखते हैं। Indomitable Flame damage 180%. Okay. Ranging Flame damage 212%. Field damage 96.3% of attack plus 1.6% of max HP. एक मिनट, फील्ड डैमेज क्या था? ओके, फायरी सेंक्टम का फील्ड डैमेज 1.65% ऑफ मैक्स HP।
ओके, हेलो ड्यूड किंग, गुड मॉर्निंग। अचानक से इतना इन्फो दे दिया कैनरिया के बारे में। भाई अभी मुझे कुछ मत बताना, मुझे प्लीज़ खेलने देना। नो, नॉट इवन उड़ता उड़ता स्पॉइलर, ठीक है। दिया कैन इवन हील हर सेल्फ इफ शी इज़ बिलो 40% HP। ये तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। फील्ड डैमेज का जो है ना, ये थोड़ा सा कम है इनका। अभी देखते हैं। ओके, लियोनाइन बाइट, unleashing her burning anger and casting her inconvenient blade aside, Diya enters a blazing lioness state and increases her resistance to interruption. In this state, Diya will automatically and continuously unleash the flame mains fist, dealing pyro damage based on her attack and max HP. Okay, and when its duration ends, she will unleash an incineration drive, dealing AoE pyro damage based on her attack and max HP. Okay, attack and max HP, attack and max HP, यही चल रहा है. If fiery sanctum field created by Diya's own elemental skill Molten Inferno exists when this ability is unleashed, Diya will retrieve it and then create another field once Blazing Lioness duration expires. This field will take on the retrieved field's duration at the moment of its retrieval. Okay. In this state, Diya will be unable to cast her elemental skill or perform normal charged and plunging attacks. Oh, okay. So एक बार आपने Q प्रेस कर दिया तो आप E प्रेस नहीं कर सकते बीच में. Normal attacks, Sandstorm Assault and Elemental Skill Molten Inferno will be replaced by Roaring Barrage. अच्छा, Roaring Barrage क्या है? Unleashing Roaring Barrage within 4 seconds after each flame main's fist strike will increase the speed at which the next flame main fist strike will be triggered. अच्छा, यानी कि आपने Q प्रेस किया, आपने नॉर्मल अटैक किया, E, नॉर्मल अटैक E, नॉर्मल अटैक E. ओह भाई बहुत तेज फिंगर चाहिए यार. 0.4 सेकेंड्स. बकवास लगी 20 दिन रुक जाऊं तो आयाका निकाल सकता हूं. दिया कांट इवन वर्क विद शिंगचो और एनी अदर सपोर्ट. दिया कांट वर्क विद शिंगचो, मतलब शिंगचो के साथ ट्राई किया किसने अभी? ओके. Unstinting Sucker. Within 6 seconds after Diya retrieves the fiery sanctum field through Molten Inferno, Ranging Flame or Leonin Bite, she will take 60% less damage when receiving damage from Red Main's blood. This will effectively trigger Diya and Molten Inferno. She will grant all party members a gold forged form state. This state will further increase a character's resistance to interruption when they are within the fiery sanctum field. Gold forged can be activated once every 18 seconds. Stalwart and True. When her HP is less than 40%, Diya will recover 20% of her max HP and will restore 6% of her max HP every 2 seconds for the next. अच्छा, इनबिल्ट हीलिंग है. इनबिल्ट हीलिंग किसी की जरूरत ही नहीं आपको. आप मतलब कि दिया की टीम में आपको हीलर की जरूरत ही नहीं है. दिया का किट टोटली ट्रैश है. यस, वाईटी में है. इसका सिग्नेचर वेपन भी CR है, HP नहीं. हाँ ये तो है. When she relies so much on HP. Arkhon, don't forget the free wishes. हाँ हाँ बिल्कुल भाई, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा. She's kind of pyro Nilu on ult. 20 मिले हैं फ्री विश. कोई कह रहा 25 मिले हैं, कोई कह रहा 23 मिले हैं, कोई 22. अब तुम कह रहे हो 20 है. सनलिट वे इंक्रीज द मूवमेंट स्पीड ऑफ योर. अच्छा ये तो पता था, ये तो पता था. चलो लेट्स ट्राई दीगा. My people are used to the desert life. But look alive! Cool it! Gloves off! यार वैसे एक बार बोलूं, फन तो है. Dodge this. Everybody stand back! Your dead mate! फन तो है. कुछ भी गाओ. कुछ भी गाओ, फन तो है. Don't get frostbite. Teamwork is trick! Ready, steady, go! यार वैसे खेलने में तो मजा आ रहा है दिया को. ये बात तो है, खेलने में मजा आ रहा है. कुछ भी गाओ. एंड एक और विद न्यू आर्कॉन. मेरे को 20 मिले, मैंने क्लेम किए. डीलुक बेटर है इससे. 20 विशेष है. इफ़ यू डू अबिस एंड क्लेम मेल के प्रीमोस. हेलो लवनीत भाई, गुड मॉर्निंग. बर्स्ट कॉस्ट 70 है और स्किल पार्टिकल्स जनरेट नहीं करते इतना. फन है बट यू नीड डैमेज टू. अभी दोबारा करूँगा एक मिनट, कंटिन्यू. आई वांट टू. बेसिकली क्या है? ओके सो जैसे मैंने क्यू में आया, You asked for it! ठीक है. एक वो एक मिनट.
इसके क्यू दबाओ तो ये अपने आप ही अटैक करती है, मैं तो बटन भी प्रेस नहीं कर रहा था, ये अपने आप ही अटैक कर रही थी। She was attacking on her own। मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। Freeze! This moment will be frozen. I'm going in. ये देखो क्यू दबाया, Gloves off. मैं नहीं कर रहा। Look alive. Oh, so sorry. लेकिन इसको दबाने के बाद अगर मैं E प्रेस करूं, ओह, तो बेसिकली क्या है? सो बेसिकली द थिंग इज, भाई बताता हूँ, रुको, मैं समझ गया इसके अटैक का, मैं चक्कर समझ गया। You asked for it. मैं समझ गया इसका चक्कर क्या अटैक का। बेसिकली क्या है कि अगर तुम क्यू दबा के छोड़ दोगे तो ये धीरे धीरे अटैक करती है, लेकिन क्यू दबाने के बाद अगर तुम रैपिडली ई दबाने लग जाओगे, रैपिडली ई दबाओ क्यू दबाने के बाद, तो ये जल्दी 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 अटैक करेगी। फन है बट यू नीड डैमेज टू, शी इज यूनिक दो, सेट बेकार दिया है तो डैमेज कहाँ से आएगा। चलो भाई बोर्ड्स का टाइम। ओके ड्यूड किंग, होल्ड करके रखना। एक्सेशन में एचपी परसेंटेज है पर एचपी परसेंट स्केलिंग C1 पे लॉक है भाई। हर ER रिक्वायरमेंट इज टू हाई। फॉर एग्जांपल शिंगचो के अराउंड 80 ER रिक्वायरमेंट, दिया का अराउंड 70 है, तो लो हुआ ना, हाई कहाँ से हुआ। SSC लगा दिया तो 2 बार E करो, ऑल्ट आ जाएगा। एक मिनट मैं जरा से कॉन्स्टलेशन पढ़ूंगा दिया के। ओके, व्हाट आर द कॉन्स्टलेशन? C1, Dia's max HP is increased by 20% and she deals bonus damage based on her max HP when using the following attack. Damage will increase with 6% of her max HP. Damage will increase with 6%। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है ये बंदी अंडर पावर कैसे है। C2 कितना पावरफुल है यार। Her C2 is good. Even her C1 is good. C4 के ऊपर इसकी एनर्जी की दिक्कत जो है हो सकता है दूर हो जाए। They will restore 1.5 energy for Diya and 2.5% of her max HP. This effect can only trigger every once 0.2 seconds. Without Constellation, she is not as good. C6 क्या है? यार पता ही क्या, ऐसे पता नहीं चलेगा मुझे ना, एक बार ना दिया का वो देखना पड़ेगा। लेट्स वॉच अ गुड दिया शोकेस। कोई कहता C6 R5 पे 30 के से ऊपर नहीं दे रही। लेट्स चेक, एक बार जरा गूगल पे चलते हैं, गूगल बाबा के पास, यूट्यूब बाबा के पास चलते हैं। मैं थोड़ा हील करूँ पहले खुद को। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज यार, मतलब कि इसकी किट इतनी ऐसी कैसे है। हर कॉन्स्टलेशंस आर गुड। एग्जैक्टली भाई, स्टैंडर्ड बैनर के अंदर आ रही है। कॉन्स्टलेशन निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा जहाँ तक मेरा हिसाब है, अगर आप स्टैंडर्ड बैनर पे पुल करो तो। लेट्स सी दिया शोकेस। ये क्या है भाई? 348,644 डैमेज। C0 पे 4-स्टार वेपन। लेट्स सी। ऊपर किसने बोला कि C6 R5 में मैंने कि C6 R5 में 30 के से ऊपर नहीं दे रही। के आरपीएल टूर्नामेंट में फर्स्ट प्राइज है 2 करोड़। 2 करोड़ जंगली रमी पे मिल रहा है। 2 करोड़ जंगली रमी पर मिल रहा है 2 करोड़। जंगली रमी पे मिल रहा है 2। लेट्स सी। Hello and welcome to my channel, Windblume Gaming. Our favorite Eremite mercenary, Dehya, has punched her way into our roster of playable characters. In this video, we'll be taking a look at what a Constellation 0 Dehya can do if you choose to hire her. Heroes Live ने टेस्ट किया, 1 घंटा रगड़ा, उसमें दिया को 10-10-10 लेवल 90 WGA के साथ 30 से भी 30 परफॉर्मेंस है। यहाँ देखते हैं I want to lose क्या बता रहा है।
कौन से किस टीम के साथ यूज़ कर रहा है ये भी देखना पड़ेगा. Alright, I'm usually a pretty positive person when it comes to most characters in Genshin Impact. Most of them are unique and useful in some interesting way. And स्किप टू शोकेस, रुक जाओ सुनने तो दो. व्यूज़ क्या हैं, दूसरे यूट्यूबर्स के क्या व्यू हैं दिया के बारे में. well, what about Dehya? Now, her design is absolutely impeccable. Her personality an absolute gem. Taking a look at a lot of different things Dehya can do, including a burst pyro DPS build, a vape build, a support build, a melt showcase, and after all that, I'll be talking about the good, the bad, and the ugly. For the first part of the showcase, अभी शुरू मत करना, क्या ना शुरू करो अभी भाई. which will be of her kit, she is using the luxurious Sea Lord at Refinement 5. For her artifacts, she is using the 4-piece emblem of Severed Fates. She is of course at Constellation 4-piece emblem दिया हुआ है. 4-piece emblem दिया हुआ है, दिया वो. 0 throughout this entire video, and her talents are at 9, 9, and 9. Starting off with her normal attacks, Sandstorm Assault. She has a bad donkey. हीरो के सब्सक्राइबर ने निकाला 10 10 10 90 भी किया. देखो आज की स्ट्रीम हीरो की. मैं खाना खा के मतलब आर्कन क्वेस्ट. हाँ अभी हम दिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो जल्दी आ जाओ क्योंकि स्टार्ट करनी है आर्कन क्वेस्ट मुझे. Looking basic attack animation. Sadly, the damage Dehya is doing with her normals and charge attacks is negligible considering she's built here for pyro damage. On a side note, I absolutely love her normal attack string animation as it looks a lot like Nightmare's animations from Soul Calibur 6. नॉर्मल अटैक डैमेज तो कम है क्योंकि पायरो डीपीएस है ना. शी इज़ अ पायरो डीपीएस तो नॉर्मल अटैक डैमेज तो ये तो एक्सपेक्टेड था. बट कुछ एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा कम है अगर लेवल 9 के ऊपर ये अटैक कर रही है तो. Let's move on to a very unique part of Dehya's kit, her elemental skill, Molten Inferno. Molten Inferno does a lot of stuff, with the first stuff being that you can plop it down and it creates a big circle. Then after the plop, it can bop an enemy once every 2.5 seconds when you do damage to it. Each bop is doing a monstrous 4005 damage on crit and appears to generate a pyro particle 100% of the time from my observations. The next stuff in the long list of stuff that it does is that you can hop a single time during its 12-second duration. This hop does some damage and allows you to relocate her elemental skill, although the hop does not refresh its 12-second. आया तो रोजारिया गान्यू काया नीलू काजुहा बेनेट शांगलिंग सबके साथ यूज़ करके देखा एकदम टट्टी है. सर बेसिकली अल्बेडो ऑन ई एंड नीलू ऑन ऑल्ट. तेनहा का देखो ज़्यादा अच्छे से दिखाया है. ये भी अच्छा दिखा रहा है. आई विन टू लूज के रिव्यू अच्छे होते हैं. Crit and appears to generate a pyro particle 100% of the time from my observations. The next each दोबारा देखना तो क्या है ये. Molten Inferno does a lot of stuff, with the first stuff being that you can plop it down and it creates a big circle. Then after the plop, it can bop an enemy once every 2.5 seconds when you do damage to it. Each bop is doing a monstrous 4005 damage on crit and appears to generate a pyro particle 100% of the time from my observations. The next stuff in the long list of stuff that it does is that you can hop a single time during its 12-second duration. This hop does some damage and allows you to relocate her elemental skill, although the hop does not refresh its 12-second duration. The next stuff her elemental skill does is that every single hit from her elemental skill applies pyro. This includes the plop, the hop, and the bop. In total, it's possible to apply pyro 7 times with Dehya's elemental skill. And as we can see, Barbara here is able to vape almost every single hit from.
16 के वेप 18 के मेल्ट ज़्यादा नहीं है. आया भी होगा डैमेज 20 या 30 के. मेन कैरेक्टर के वॉइस है बहुत सारे यार कॉन्क्वेस्ट में, जितने पहले आते थे उससे ज़्यादा. अच्छा दिलावर भाई को आने दो यार, वो कह रहे मैं खाना खा के आया. शुरू मत करना. मैंने कहा ठीक है. कोकुमिया मोना के साथ अच्छा काम कर सकती है. देखो कोई ना कोई तो उसकी टीम ऐसी होगी जिसमें डैमेज ज़्यादा देगी. देखें तो सही पूरा. From it. Sadly, despite all the vapes, it's still not really doing much damage. And if you thought that was all the stuffs her elemental skill does, it still does even more stuffs. As we can see in this clip, on the left, Ganyu is getting smacked around by the Primo Geovishap's spin the wind attack, and on the right, we can see Deya's plop adds a significant amount of super armor. Ganyu is able to sit through 2 of the Primo Geovishap's spin the wind attacks thanks to Deya's passive Unstinting Sucor, which adds the gold forged form state that significantly increases a character's resistance to interruption for 9 seconds after using her plop. Ganyu is also taking significantly reduced damage thanks to the damage reduction / sharing that Deya's elemental skill provides, and Deya is taking that damage gradually in Ganyu's stead. Okay. Phew, we can finally stop the plop, bop, and hop and drop on over to the next part of her kit. Her elemental burst, the Leonine Bite. By mashing left click like the truly skilled gamer that I am, Deya can do up to 10 punches and ends her 10 punch combo with a slam at the end. And this part is incredibly important to note. Despite mashing left click during Deya's elemental burst, it does not work with Xingqiu and Yelan's bursts. Again, it does not work with Xingqiu and Yelan's burst. Dead. खत्म. टाटा. Bye bye. हो गया. Does not work with Xingqiu or Yelan's burst. भाई TTC गेम अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल रखो, ठीक है. मुझे करने दो कि आर्कॉन का मैं देख लूंगा. तुम इतनी सारी मेरे को इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हो, मैं तुम्हारे मैसेज नहीं पढ़ूंगा, बता रहा हूँ अभी. I need to say it one more time so that way you guys know. एंटिसिपेशन भी क्रिएट मत करो. कई बार क्या होता है कि इंसान को शौक होना भी अच्छा लगता है. तुमने इतना बता दिया ना कि एक और कैरेक्टर है जो क्या कहते हैं, जो मैं पहले नहीं बताऊंगा, तो अब मेरे अंदर एंटिसिपेशन रहेगी कौन सा कैरेक्टर है. मुझे नहीं पता तो ज़्यादा बेटर रहता. Deya's elemental burst does not work with Xingqiu and Yelan's bursts. Let's now use her entire kit to bash in our Regisvine friend's face. भाई पूरे के पूरे एंटायर किट के अंदर रेजिस्वाइन नहीं मार पाई. इसमें तो डीलूक मार देता. Unfortunately, even with such a raw pyro damage focused build, Deya was not able to single cycle our Regisvine friend. Well, let's see if this Deya build can succeed in a full team. इसमें आधा डैमेज तो शांगनी दे रही थी. This is the, what I will call the Burning PP team, also known as a pure pyro team. As we can see, with only 4 डीलूक बेटर है. हाँ ये तो मुझे पता लग गया. पर यार काश डीलूक का प्ले स्टाइल भी थोड़ा सा दिया जैसा होता, मजा आ जाता. our teammates and 4-star weapons, this Burning PP team was able to roast our robot chicken in a single rotation. Well, let's be बहुत गलत कर दिया दिया के साथ इन लोगों ने. honest here, Xiangling did a lot of the damage, but Deya still did contribute. But you might be wondering, what about vape? That's right, Deya is indeed a pyro character and thus can vape. For this build, Deya is using a Refinement 5 Rain Slasher and the 4-piece Gilded Dream. Let's see how much damage she can do with her elemental skill. ना 11,000 तो कुछ भी नहीं है. ट्रैवलर दे देता है. डेंड्रो ट्रैवलर एक ही के ऊपर 14,000 डैमेज दे रहा है मेरा. Each bop is now critting for 10. मुझे तो 3 के पिटी में टाइनारी मिल गया. हाँ सुबह देखा, डिस्कॉर्ड भेजा था तुमने.
10,017 damage on Vape, and now the Hop did 18,316 damage on Vape. And sadly, even with Vape, her elemental skill isn't able to take out the Registine, but at least now it's certainly non-negligible damage. इतना बड़ा क्रश मेरा दिया, उसका क्या कर दिया इन लोगों ने? Let's try to Vape her Look what they did to my child. entire kit. やるか耐えられるか Bro, एक रोटेशन में क्रायो रेजिस्टर नहीं खत्म हो बताओ. Funnily, Nilo happens to be the most reliable way for Dehya to actually vape her entire kit. We can observe a couple things in this clip. Her Elemental Burst's punches have standard ICD, vaping 4 times over the 10 hits. In the last तो हमने पहली चीज ये देखी यहाँ पे कि नीलू ज़्यादा बेटर है दिया के साथ टीम में. combo finisher Slam has its own independent ICD and also vapes. And with the power of needing another 5-star character to act, इसका न्यू सेट आएगा. इनको बफ करना पड़ेगा दिया को, पर हो सकता ना भी करे. ये कौन सी आर्कॉन है? जैसे जोंगली को बफ किया था इन लोगों ने, इसको नहीं करेंगे. इन्होंने इसको डाल दिया स्टैंडर्ड बैनर के अंदर और ये भूल जाएंगे अब दिया को. actually vape her entire kit, Dehya was barely able to knock out our Registine friend. Another role that Dehya can actually fulfill is that of a support character. One team that does appreciate additional pyro application is Melt Ganyu. My personal favorite variation to use Dehya as a support with Melt Ganyu is with Nahida. Dehya provides Ganyu with a much needed super armor, while also making it easy and more reliable to apply enough pyro to melt all of Ganyu's charge shots. I especially like this clip because it also demonstrates that Deya's added super armor wore off before Deya's elemental skill did, or perhaps Ganyu's interruption resistance bar was depleted or something like that. Either way, the super armor is nice when it works and does allow Ganyu to shoot her massive bazooka blasts. किसी की निकल गई और किसी के पास गानी हो तो ऐसे यूज़ कर लो दिया को. C1 के साथ डैमेज इंप्रूव होगा, बट कितना होगा ये नहीं पता. यार डैमेज C6 के साथ भी इंप्रूव होगा. C6 बहुत ज़्यादा डैमेज इंप्रूव कर रहा है. C2 अच्छा है, C4 भी अच्छा है दिया के लिए. बेसिकली अगर सिया के C6 निकल जाए ना तो तुम उसको सीरियसली सोच सकते हो यूज़ करने के लिए. अगर तुम्हारे पास D-Look नहीं है, C1 D-Look है तो तुम सोच सकते हो. Well, I'm feeling a bit dejected by her performance, so let's cheer ourselves up with a Melt showcase. अच्छा तो ये था. With a serpent spine and food. And by using Deya's And highest food. accessible multiplier, which is actually her plunge attack, Plunge damage. we were able to do this fancy trick in using the green warpy thingy to do a plunge attack against Mr. Scaramucci, doing a modest 348,644 damage. क्या न्यूक है. Okay, let's see the verdict. Alright, it's finally time to talk about the good, the bad, and the ugly when it comes to Dehya. In the background, we will have the Burning PP team clearing Abyss 12. Let's start with the good. Dehya is a really endearing character, and her design is stellar. Her animations feel impactful, and her kit is unique. Also, as you can see in the background, the Pure Pyro team is functional enough if you really want to make her work, and she does have some other functional team comps as well. Now, of course, other Pyro characters will do more damage than Dehya does in this comp, but Dehya does actually have her own unique set of advantages, mainly being a lot more difficult to interrupt, or having less opportunity cost for not vaping her damage in comparison to a character like Hu Tao. She's also relatively easy to use in a Pure Pyro team. Dehya does provide a bit of utility and nearly perfect super armor for at least a few seconds. Anyway, that's where the good ends. Outside of a Pure Pyro team, Dehya really struggles to find a niche. Do you need super armor? Well, Zhongli exists, and he improves your team's damage with his resistance shred, and he completely mitigates damage instead of splitting it. You can often get away with no healer and face tanking stuff with Zhongli, but with Dehya, you will absolutely need a healer if you plan to face tank anything. Do you need pyro damage? Well, Xiangling, Hu Tao, and Yoimiya are all ridiculously good pyro damage characters. Remember, Dehya wasn't even able to
single cycle the Regisvine, while for the aforementioned characters and even Klee, such a task is completely trivial. Do you need a bit of pyro application every 2.5 seconds? Sadly, such slow off-field pyro application is just not needed in any team. And of course, Xiangling exists and does way more off-field damage and pyro application than Dehya does. Do you want to use her for Virgin? Well, Toma exists and he is infinitely better for Virgin due to his much faster tick rate. And finally, the worst part about her is that her multipliers are just way too low. All this could be justified if she just did a lot of damage. Anyway, this is just the bad. Let's also talk about the ugly. Dehya's kit reminds me of pre-buffed Zhongli. Low impact, not a remarkable amount of damage, and finally, it actually पर जिस तरीके से जोंगली को इन्होंने buff कर दिया, मुझे नहीं लगता दिया को करेंगे ये लोग. feels bad to use her. The most important thing to know is that Dehya's elemental burst doesn't even work. देख लिया, लग गया, इसी में पता लग गया. इसी में पता लग गया. With Xingqiu and Yelan and मैं believe नहीं करना चाहता था कि दिया की इन्होंने इतनी अंडर पावर किट बनाई है, पर similar things like that. So please take this into consideration if you're thinking about wishing for Dehya. Dehya also doesn't have super armor while trying to plop down her elemental skill. This means that she will be frequently interrupted while trying to provide super armor to the team, similar to how Zhongli was always interrupted when he was trying to cast his shield back in the day before he was buffed. Dehya's super duper armor team buff also only lasts for 9 seconds. And after those 9 seconds, it barely feels like you have any super armor at all. Given that her E has a 20-second cooldown and the Gold Forged State has an 18-second cooldown, you have tons of downtime on her super duper armor, and the visual indication is difficult to see. This leads you to just getting tossed around when you are expecting to actually face tank something, which just feels really bad. Next, her elemental burst puts away her elemental skill. This leads to a couple of issues, but first of all, she can't even generate and catch particles during her elemental burst, so she actually has tons of energy issues if you're planning to use her burst a lot. And during her burst, the auto-targeting is wonky. It's really hard to keep enemies grouped up during it, and she can even be frozen during her elemental burst. This would all be acceptable again if she just did a lot of damage, but alas, she does not. So yeah, as you can tell, I'm quite disappointed in Dehya. Is she completely useless? No, of course not, as she does have viable team comps. It's just that it's hard to justify getting her in comparison to almost any other featured 5-star character. Her main issue isn't that she's completely useless, it's just that there's always a better alternative for literally everything she does, and the combination of her strengths isn't enough to outweigh that. Of course, if you really like Dehya like I do, you can absolutely make her work. Sadly, Dehya really feels like she is suffering from a severe case of the Kuki syndrome, where miHoYo perhaps has something planned for her in the future. However, I'm also not entirely sure about this either, since Dehya is being tossed into the standard banner in the next patch, which means that it's very unlikely she'll get a dedicated rerun. Now, this also does open up some chances of getting her consolations for even free-to-plays, because when they lose their 50/50s, there is a chance that they will get Dehya. पक्का इंटेंशनली बेकार किट बनाया है बाइजो को हाइप करने के लिए. आई डोंट नो व्हाई सुमेरु के 5-स्टार कैरेक्टर इतने अंडरवेलमिंग है ना. नाहिदा के अलावा कोई भी ऐसा सुमेरु का 5-स्टार कैरेक्टर नहीं है जो कहेगी वाह क्या डैमेज दे रहा है. एक भी, मतलब कि वॉन्डरर के बारे में हम इतने हाइप थे, वॉन्डरर को इन्होंने इनाज़मो से उठा के सुमेरु का बना दिया और वो भी डैमेज नहीं दे रहा ठीक से. क्या बात है. हाँ, पहले मुझे वो देखना था ना. 1 मिनट, प्रीमोस किधर मिल रहे हैं. प्रीमोस भाई कहाँ मिल रहे हैं. अच्छा ये अच्छा, सारे के सारे जितनी भी अब तक हमने किए सबके लिए एक एक मिल रहा है. वाह. 2 3 4 5 6 7. हर एक क्वेस्ट के लिए जितनी हमने अब तक आर्कन क्वेस्ट के सबके लिए एक प्रीमो.
कितना अच्छा लग रहा है। डैमेज छोड़ो, किसी भी 5 स्टार्स ने मेटा चेंज नहीं किया। इसने किया ना, नाहिदा ने किया, नाहिदा ने किया। वॉन्डरर टाइनारी पावरफुल है यार। अब तक ना कोई भी ऐसा मस्त सा शोकेस नहीं देखा। किसने बहुत रेयरली बनाया तो बनाया हो कि भाई वॉन्डरर ने 1 मिलियन डैमेज मारा हो। वो चीज़ आई नहीं अब तक निकल के। ओ अब ये वाली है यार। मुझे तो कुछ क्या कहते हैं, ये कह रहे कितने मिले मेरे को? 10-12 मिलेंगे करीब। इनकम्प्लीट स्टोरी क्वेस्ट। अच्छा ये पूरी करूँगा तो और मिलेंगे, ऐसा क्या? और क्या है? इनकम्प्लीट हैंगआउट इवेंट किसका? अच्छा बायू DPS नहीं है, सुपर सपोर्ट होगा लाइक येलान। टाइनारी का शोकेस नहीं देखा? टाइनारी का देखा था। ओके और टेस्ट रन ये ले लिया। 20, चलो 20 प्रीमोस यहाँ लेते हैं चल के। पहले 20 ही मिले, 20 का मिले मुझे। आर्कन क्वेस्ट कर लिया क्या? नहीं भाई अभी नहीं किया, हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। अब तुम आ गए हो तो अब करेंगे। Let the show begin. Nowhere to run! Through me, justice is served! Their penance is due! Judgment is upon them! ये भी सही है। चेक कितने विशेष हो गए अभी देखता हूँ। मुझे भी लगा था 10-12 ही हैं, बट विश वाला खोलते देखते 20 थे। 1 मिनट यार, 16 थे। हाँ 20 हो गए, 20 हो गए। यस 20। यहाँ पे 16 थे, 16 थे और अब ये 36 हो गए। इमेजिन आगे से सब कैरेक्टर्स ऐसे ही टट्टी आने लगे तो। नहीं ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा मत बोलो। मेरे पास 10,000 प्रीमोस हो गए, 36 विशेस वैसे हो गई। करेंगे करेंगे, सेव करेंगे, मज़ा आएगा। ये भी दे रहा है क्या? ये नहीं दे रहा। चलो आर्कॉन क्वेस्ट स्टार्ट करते हैं। 1 सेकंड बस। गाइज मुझे 1 मिनट दो, मुझे एक बार ज़रा मम्मी को फ़ोन करना है, इंपॉर्टेंट कॉल है। बस 2 मिनट में आया, 2 मिनट में, जाना मत। आते हम आर्कॉन क्वेस्ट स्टार्ट करेंगे। वेट।
आ गए जी, आ गए, वापस आ गए. आई एम टू एक्साइटेड. डेस्टिन्ड एनकाउंटर. यस. टॉक टू मसरूर. Masroor Airport Ormuz is currently worrying of himself sick over a letter with an unclear address. Okay जी. Let's go. Navigate. कहाँ गया? डैम तब तक तो कुछ ज़्यादा ही प्रीमोस कलेक्ट कर लूँगा. जोंगली तक मेरे भी काफ़ी हो गए हैं. कितने हो गए? एक मिनट. कितने विशेष होगी कैलकुलेट करते हैं ज़रा. 36 येरी. 10,404. 10,404 डिवाइडेड बाई 160. 65 प्लस 36. मेरे पास 101 विशेष सेव हो गई हैं. इससे ज़्यादा विशेष मैंने आज तक सेव नहीं की. पिछले 2 साल से मैं गेम खेल रहा हूँ. इतनी मैंने कभी सेव नहीं की. हमेशा खर्च कर देता था. बड़ा अच्छा लग रहा है. बड़ा अच्छा लग रहा है. चलो मसरूर के पास चलते हैं पहले. आओ मसरूर. लीवे का नया रीजन आएगा. यार लीवे को लात मारो. मॉन्स्टेट के नए रीजन कब आएंगे? लीवे शुए तो सब ठीक है. आओ अल्ट्रा. अरे अल्ट्रा कब आया? अच्छा अल्ट्रा आ गया था. सॉरी मैंने अभी नोटिस किया. आओ हमार मॉडरेटर बा. यस मिस्ट स्प्लिटर. यस मिस्ट स्प्लिटर. मैं तो पहले ही आया था. You're that blonde traveler who's on a journey to all corners of Tibet, right? Yes, that's me. Who's asking? Do you need something from us? You bet I do. I was worried I wouldn't be able to find you. I have a letter for you, you see. It's from another Outlander. Ooh. It's from another Outlander. He was a crafty fellow, let me tell you. Took advantage of a loophole in our mailing system by opting for guaranteed delivery, then filling in the most obscure mailing address I've ever seen. क्या आपने मिस स्प्लिटर के लिए प्रीफार्म कर लिया? अभी नहीं भाई, अभी आने तो दो, कर लेंगे. भाई TTC गेम्स मैं तेरे मैसेज पढ़ ही नहीं रहा. तू स्पॉइलर दे रहा है मेरे को. आई एम नॉट रीडिंग योर मैसेजेस जब तक ये क्वेस्ट पूरी नहीं हो जाती. Well, we aren't always on the road, so yeah, it's pretty tough to get mail to us unless we happen to go to the post office on a whim. So, what address did that person give you anyway? He just wrote, next to a small, white-haired talking fairy. What? So the address is Paimon? Yeah, exactly, right? And if I failed to deliver the letter, I'd have been bound by regulation to compensate him. Really, he got me good. I count myself very lucky that I ran into you here. Of course, here it is. All yours. Come on, Paimon wants to have a look too. It's been a while. How have you been? I've heard that the two of you are traveling in Sumeru, and I happen to be in Port Ormuz on official business. Lately, I've been stopping by Jafar Tavern for a drink or two every afternoon. If luck's on my side and this letter successfully reaches you, come to me, then we can catch up on old times. We'll see it as fated encounter. Your trusty buddy Kaya. Arre, Kaya! सिंबॉलिक डोर नहीं, असली वाला डोर. भाई तू मुझे भाई एक काम कर, मुझे कुछ मत बता इस क्वेस्ट के बारे में. डोंट टेल मी एनीथिंग. Kaya, huh? ठीक है. So he's here in Sumeru. Now that Paimon thinks about it, Crafty does describe him pretty well. From what he wrote in the letter, it looks like he didn't think there was much chance of it reaching us. Or maybe he's just being sneaky. Do you
think he's making this sound like a miracle of fate so that we'd have to go meet up with him? Yeah, you're right. It's always nice to see old friends. काया क्या कर रहा है सुमेरु में? आपको भी फ्रस्ट्रेशन होगा पर उस पार्ट पे कोई बात नहीं, होने दो. बस लेट एवरीथिंग कम नेचुरली. समझ रहे हो? सब कुछ नेचुरली. फ्रस्ट्रेशन हो रही है, लेट इट नेचुरल कम नेचुरली. मुझे पहले से एंटिसिपेशन होगा ना तो वो चीज़ ना थोड़ी सी हो जाती हैं. चलो गॉट टू गो, स्टडी बोर्ड्स हैं. ओके यार, स्टडी वेल, बाय. The letter says that he hangs out at Jafar Tavern every afternoon. Perhaps we should drop in on him then, huh? कैरिबे. कैरिबे का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? कैरिबेयर मीनिंग. कैरिबेयर तो कोई वर्ड ही नहीं है. चैरीबेयर है जिसका मतलब होता है फ्रैंकिश गिवन नेम मीनिंग ग्लोरियस वॉरियर. ओके, वेट अंटिल द फॉलोइंग आफ्टरनून 16 to 18. आज कंप्लीट कर दोगे पूरा क्वेस्ट? आज ही इसी सेटिंग के अंदर पूरा होगा. Kaya should be at Jafar Tavern right now. Let's go see him. वो बैठा नीले बालों वाला. I'll have something I haven't tried yet, boss. Sorry, sir. I'm afraid you've already tried every type of liquor we serve. Oh? Well then, just the bill, please. It's just as well, I suppose. I do have other matters to attend to. Kaya, you're really here! Paimon half thought you were playing some sort of prank on us. Hey, Paimon, traveler. Looks like the gods smile upon me after all. And come now, I wouldn't joke about wanting to see my good friends. Wait a second. You must be here on official business, right? What do you think you're doing spending every afternoon drinking at the tavern? You itching for a lecture from Jean? Not at all. The acting Grand Master positively terrifies me. Why would I ever do anything that might displease her? The truth is, I'm in Sumeru to learn about the alcohol industry here. So despite how it might look, I'm actually at Jafar Tavern for strictly business purposes. Okay. Sumeru's spices are famous the world over, and it's long been rumored that this fine establishment was where a certain very popular spiced cocktail was invented. That's why the knights sent me, their foremost expert in alcoholic beverages, to come and see if it is as good as the rumors say. वेंटी को भी लिया था साथ में. And how did that go? So far, so good. I'm already in talks with some spice merchants in Port Ormos about some potential collaboration. Yeah, that does sound like a great business opportunity. Guess Don Winery and Master D-Luke are gonna make a tidy sum from this one too, huh? Well, let's not get ahead of ourselves. Whether this lucrative opportunity gets passed along to Don Winery or not depends on how nice I'm feeling. Hey, using your job to settle personal grievances isn't very knightly, Captain! Oh? What makes you say that? Very sharp of you. I wouldn't say I'm familiar, though. I just came here on the sly once, when I was very young. वेंटी तो नाहिदा को पिला देता. हाँ ये तो है. वैसे बड़े इंटरेस्टिंग है क्योंकि काया का बैकग्राउंड कांड्रिया का बताते हैं ना, तो इस क्वेस्ट में काया है. So I'm very excited to see where this goes. And? Do continue. Do I have to? When I said we could talk about the old times, digging up my past wasn't exactly what I had in mind. Well, all right, since you're so interested. Like I said, I was very young then. Don Winery had only just taken me in. I overheard my adoptive father talk about sending a team of merchants to Sumeru during a business meeting. I'm sure you'll agree that everyone's curious about their roots on some level. And my roots? They're in Conria.
which is said to have been located deep underground, somewhere near Sumeru. खुल के बता रहा है, मतलब छुपा ही नहीं रहा, खुल के बता रहा है कि मेरे रूट्स खानरिया के अंदर हैं. And so I stowed myself away amidst the cargo and silently joined the merchant delegation on their trip to Sumeru. But it wasn't long before the merchant delegation received news that I'd gone missing. Their leader promptly found me, and before I knew it, my adoptive father was dragging me back home by the ear. It was a short-lived adventure. Sorry I don't have a more thrilling story for you. Honestly, not much. The only reason I knew that Conria was near Sumeru is because I happened to read that in a book when I was young. ये रहा Dainsleif. क्या इंट्रोडक्शन है, क्या इंट्रोडक्शन है, वाह. My life had less and less to do with Conria as I grew up, and so I started caring less as well. I used to believe that I had inherited some sort of duty from my father. But then I began to wonder. Maybe my father left me in the peaceful land of Mondstadt for no other reason than simply to give me a happier life. A happy life sounds good to me, of course, even if it means being cut off from certain things. लेकिन इनको ये बात लग नहीं रही कि खानरिया तो 500 साल पहले डिस्ट्रॉय हो गया था. ये कब पहुंचा वहां पे? ये क्या टाइम ट्रैवल करके पहुंचा? This is obviously all speculation. Simply put, I'm afraid that I'm not particularly in the know on this topic. मैं बहुत ध्यान से डायलॉग पढ़ रहा हूँ, बहुत ध्यान से. These days, my surname, Alberich, is probably the only link to Conria that I have left. Alberich? मुझे नहीं पता था काया का सरनेम Alberich है. One death afternoon, please, boss. Yeah, boy. Tell me, what do you know about the significance of that name, Alberich? फादर कौन इसका? इसका फादर कानरिया का ही कुछ था, उसके बारे में नहीं पता. Dainsleif? कितना सरप्राइज है, इसका चेहरे का एक्सप्रेशन देखो. इसका भाई ये Dainsleif बगल में बैठा है और ट्रैवलर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखो. 0 नील बटे सन्नाटा. Ah, you've decided to join us. I was wondering how long you planned on listening in. I believe I've seen you before in Mondstadt. Dainsleif, if I'm not mistaken. So you remember me. Then we are already acquainted. Kaya Alberich, descendant of the Abyss Order's founder. What? What the fuck? गहरी सांस, गहरी सांस. अबे अबिस ऑर्डर के भाई मेरा दिमाग ना पूरा ही इस टाइम सब कुछ हिल गया दिमाग के अंदर. लेट द स्टोरी कंटिन्यू. मेरा पूरा दिमाग हिल चुका है इस टाइम. देखो अबिस ऑर्डर के बारे में ये बोलते हैं कि खानरिया, देखो दो थ्योरी है कि खानरिया के जो सिटीजन्स हैं वो अबिस ऑर्डर में कन्वर्ट हो गए कुछ, और कुछ बन गए हिलीचर्ल्स, जैसे कि हमें पीछे पता चला. ठीक है. एक थ्योरी ये है कि अबिस ऑर्डर जो है वो खानरिया से अलग था और अबिस ऑर्डर ने खानरिया पे अटैक किया और बाकी सारे नेशंस ने मिलकर खानरिया को अबिस के साथ ही डिस्ट्रॉय कर दिया और बाद में सारे मिशमैश हो गए. और आज का करंट अबिस ऑर्डर की जो वो है लीडर है वो हमारे ट्रैवलर की सिबलिंग है, लुमीन. तो ये कैसे मतलब कि पास ऑन हुआ? वो ऑर्डर, वो फाउंडर था, फिर लुमीन पे कैसे ट्रांसफर हुआ? डू यू नो इन वन क्वेस्ट एवरी कैरेक्टर्स विजन ग्लो गोल्डन? नहीं भाई, कौन सी? वो भी पता चलेगा अभी क्या बोल रहे हो अभी आगे जाके. वो थ्योरी में कौन सा सही है वो पता चल जाएगा. ओके, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. यार आई लव गेंशिन की स्टोरी. मजा आ रहा है, मजा आ रहा है. हाँ? What? I take it that you weren't aware of this until now, Kaya.
Or you wouldn't have been so forthcoming with your surname. जेड चेम्बर रीबिल्ड वाला नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया. मैंने खेला है वो वाली स्टोरी क्वेस्ट, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि गोल्डन ग्लो करते हैं. Oh my. That's quite a lot of baggage for a surname, isn't it? Though I must say, it does confirm an old suspicion of mine. I suppose that was why my father left me in Mondstadt after all. I'm surprised that you take me at my word without the faintest hint of skepticism. Well, perhaps what you told me just happens to answer some questions I carry in my memories. And in any case, I recognize your eyes. क्योंकि काया की eyes और डेंसलेफ की eyes almost same है. Check. You're a pure-blood Conrian, aren't you? जो आपने बोला अभी हिलिचल कौन है, नॉर्मल पीपल कौन है, खानरिया का वो सब पता चलेगा. डोंट वरी, आई एम एक्साइटेड फॉर इट. Very clever. Forgive me for being direct, but I sincerely hope this new knowledge doesn't change anything. If you've already let go of your ties to the past, then keep it that way. Kaya, you're not involved with the Abyss Order in any way, are you? Hey, hold on now. This conversation has taken a rather sudden turn for the deadly serious. And I'm afraid that as someone from Mondstadt, I'm not accustomed to this sort of atmosphere. अच्छा, तुम लोगों को शायद पता हो, एक चीज़ बताओ. स्नेजनाया एक कैरेक्टर ऐसा है हमारे रोस्टर के अंदर, मतलब कि गेंशिन इम्पैक्ट में कैरेक्टर ऐसा है जो स्नेजनाया से बैंड है. वो कैरेक्टर कौन है? जिसको स्नेजनाया ने बैन किया वो एंटर नहीं कर सकता. जब स्नेजनाया आएगा रीजन तब देखेंगे कि वो उसके साथ क्या होता है वहाँ पे, जब हम उस कैरेक्टर को स्नेजनाया में लेके जाएंगे. लेकिन इस टाइम वो कैरेक्टर जो है स्नेजनाया से बैंड है. बताओ कौन सा कैरेक्टर है वो? स्नेजनाया एज अ कंट्री हैज़ बैंड दैट कैरेक्टर टू एंटर द लैंड. बताओ जल्दी जल्दी, उसके बाद आगे बढ़ाता हूँ मैं. डीलूक और कोई? आई थिंक उसके स्टोरी क्वेस्ट में ही वो बोला था. यस, द आंसर इज डीलूक. डीलूक ने अंडरकवर रह के स्नेजनाया में बहुत तबाही मचाई थी. फटुई के इतने सारे अंडरग्राउंड बेसिस को डीलूक ने अकेले सिंगल हैंडेडली ख़त्म कर दिया था कि उन लोगों ने परेशान होकर डीलूक को बाहर निकाल दिया धक्के मार मार के कंट्री के, और बैन लगा दिया एंट्री पे. So what if I know my ancestry? Do I strike you as the type who would be bound by that kind of thing? Relax. I'll be just as delighted to hunt down the Abyss Order tomorrow as I have always been. Either way, looks like we're out of time. I've got a spice merchant to meet in a minute, so I'll leave the three of you to carry on the conversation without me. Well, alright then. You go do your thing, Kaya. मतलब सबको स्टार्टिंग से पता था काया का कुछ ना कुछ तो लिंक है अबिस के साथ, लेकिन फाउंडर का बेटा है और फाउंडर ने अबिस ऑर्डर फाउंड करने के बाद इसको छोड़ दिया मॉन्स्टेट के अंदर. वाह. See you around. And Dainsleif, no need to listen in from the sidelines next time we meet. Let me buy you a drink. You don't really trust him, do you, Dane? You're both from Conria, but you get on like oil and water. The fact is, I still do not know him well. It would be meaningless for me to jump to conclusions. But can a person truly be unaffected by their ancestry? This remains to be seen. Well, I suspect that they call your sister their princess, precisely because there is a succession of sorts. Oh, so if she was the founder, she'd be the queen, right? I mean to investigate the Loom of Fate. Do you remember that name? याद तो आ रहा है कुछ. Yeah, the Abyss Order's evil plan! We learned about that back in Mondstadt. Not new. Not exactly. My memories suffer from erosion. But while I was recovering my health recently, I suddenly remembered something. गुस्सा आ रहा है? किस बात पे गुस्सा आ रहा है भाई? नाइट बॉट ने तुम्हारा मैसेज हटा दिया. दोबारा बताओ किस बात पे गुस्सा आ रहा है? Your sister.
She mentioned the Loom of Fate back when we traveled together. गाली कौन सी थी? कुछ निकल गई होगी शायद गलती से। उसके ऊपर इतने बड़े, एक तो छोटा क्वेस्ट है, ऊपर से इतने बड़े क्लिफ हैंगर पे छोड़ा है कि क्या ही बोलूं यार। फिर स्पॉइलर दे रहा है। लगता है मुझे ना क्वेस्ट करनी पड़ेगी, ये नहीं मानेगा। Apparently so. I was also quite surprised when these memories tallied up. I recall that we were traveling to Sumeru when the matter was brought up. So, you're going to the place that she mentioned back then? Correct. At that time, they must have been introduced in one way or another to this concept. If I recall correctly, we were somewhere in a Vidya forest then. ये तो हर बार करते गेंशिन वाले। हाँ वो तो है, but Well, what are we waiting for? Let's go! Maybe we'll discover some secret that's lain hidden for hundreds of years! No. Now is not the time. No, it's just... I'm still waiting for my drink. Seriously? Okay, let's go to Avidya Forest. यहाँ से चलें, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। यहाँ से जाता हूँ नीचे, या अंदर भी हो सकता है ये। आई थिंक इट्स इनसाइड। यहाँ कोई आरनारा खाना बना रहा है। चलो यार पढ़ लो, तुम भी पढ़ो जाके। आज मुझे लगा था आज क्वेस्ट करना तो बहुत सारे लोग होंगे। लो। Wait. This place, it's familiar. What about it? It looks pretty normal to Paimon. Was it like this hundreds of years ago too? Yes. The forest has barely changed from how I remember it. There is very little human activity here after all. Let's search the area and see what we can find. Okay. Is this a field? It must belong to whoever owns that house over there. But it looks like it's been abandoned for a long time. You could be forgiven for thinking nothing was ever grown here. Or, wait, maybe nothing ever was grown here. It's an extinguished bonfire. Forest rangers, perhaps? Looks like it's been ages since it was last lit. And clearly they put it out carefully to prevent a forest fire, too. That's responsible. Nothing else stands out in this area. All that's left is that building. Come on. Wait, we're just gonna go barging in? What if someone's home? सब लोग क्वेस्ट करने में बिजी हैं। Unlikely. There are no signs of life in this area. तो मुझे अगली बार से We should क्वेस्ट be able एक to दिन के enter डिले without के बाद incident. करनी पड़ेगी। If you say so. Well, you lead the way then, Dane. So there really isn't anyone home. Ugh, this place is so dusty. Paimon bets no one's lived here in years. हाँ बोर्ड्स भी ये लोग। Investigate carefully. We mustn't miss a single detail. Look, it's a bowl. Guess whoever used to live here liked to cook, huh? Can't you smell it? There's a heavy scent of medicinal herbs in here. Oh, so it's a medicine bowl?
Seems you're right. You've got a good nose on you, Dane. There's a box over here. Why don't we open it? And by we, Paimon means you. Paimon's just scared that whatever's inside might bite her fingertips off. Huh? This is a mirror. Broken mirror. It's broken too. Was this a makeup box? That's kinda disappointing. Paimon was hoping we'd uncover some super big secret, especially after Dane talked this place up. This bed looks pretty ordinary. Huh. There's nothing underneath it either. What sort of person would want to live here? It's so dark and damp. Can't be all that comfortable. Doesn't look like there's anything else worth our attention here. You sure we're in the right place, Dane? My memories are quite foggy, but my subconscious and instincts both assert that something once happened here. But we'll exhaust ourselves if we search aimlessly. I hear noises outside. Let's go and check. Noises? Is it? It's not much. Just some minor adversaries. Monsters? Wow, Dane's ears are sharp, just like his nose! Surprisingly good taste for 500-year-olds. Although for someone who's as full of surprises as Dane, it's hardly a big deal. Anyway, let's beat up these monsters! I doubt that the appearance of those monsters was wholly random. There must be something nearby that attracted them. A ley line anomaly, perhaps. But it seems to be more than that. Okay. I'll go slightly further out to investigate any issues with the nearby ley lines. I might be a while. You should wait for me here. एक चीज़ नोटिस की, ट्रैवलर का केप और डेन्सलिफ का केप सेम है. दोनों के केप सेम डिजाइन, सेम हेयर कलर. What? You're going alone? You better not be trying to keep some secret from us. Your suspicions are as banal as they are unwarranted. I merely think that this house should remain the focus of our investigation, and as such, someone ought to stay here and keep an eye on it. हेयर छोटा है, लेकिन जो पीछे केप है वो सेम है. Not to mention that if even forest rangers are capable of investigating ley lines, I will be more than able to handle it alone. फ्यूचर एथर, हाँ हो सकता है. Fair enough. Guess we'll just camp out here then. कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लुमीन का भाई ना होकर लुमीन का बेटा है. डेन्सलिफ और लुमीन का बेटा है एथर. Good thing there's a fireplace over there. Let's make ourselves something to eat. All this running around has made Paimon real hungry. फ्यूचर हु? एथर. हमारे मेन कैरेक्टर का नाम एथर है भाई. पाइमॉन का भी सेम है, सेम कलर. नहीं, पाइमॉन का कलर सेम नहीं है. पाइमॉन बिल्कुल वाइट है. लाइट द बॉनफायर. Light the bonfire. I guess the housework can wait. ऐसा कुछ नहीं है. Your cooking is as दोनों good के as कलर ever. दोनों के कलर Even डिफरेंट if है. there was ये no ब्लॉन्ड other है, reason, ये the सिल्वर food है. alone would be enough for Paimon to stick with you. Changing the subject, Dane's taking forever. He said that there might be an issue with the nearby ley lines.
How bad do you think it could be? अपने ट्विन का ट्रैवल पार्टनर डेंसलेफ था और कुछ नहीं। भाई हम तो बस कह रहे हैं कि जब दो लोग ज़्यादा साथ में ट्रैवल करते हैं तो लंबे टाइम तक ट्रैवल करते हैं तो प्यार पनप सकता है बीच में लोगों के। यू नो, यू डोंट नो, मैं केप की बात कर रहा हूँ। नहीं, पाइमॉन का केप डिफरेंट है। पाइमॉन का केप डिफरेंट है। पाइमॉन के केप में कुछ लटका नहीं हुआ नीचे। Now it's back to just being the two of us again. You know, now that Paimon mentions it, we really have spent lots and lots of time together, haven't we? ये तो मैं कह रहा हूँ, जो लूमीन के लिए डेंसलीफ है वही एथर के लिए पाइमॉन है। हो सकता है इनके बीच में भी लव स्टोरी क्रिएट हो जाए थोड़ी सी। I can just hope. So don't take this the wrong way or anything, but do you ever get tired of Paimon being around? Important questions are being asked. Hard questions पूछे जा रहे हैं भाई। Hard questions पूछे जा रहे हैं। I like it. I like Paimon. You make my day every day, Paimon. Oh, you stop it! Now you're embarrassing Paimon. FBI भाई इस गेम में सबसे क्या कहते हैं ज़्यादा उम्र की पाइमॉन ही लग रही है मुझे। अभी तक क्या हुआ? अरे तुम तो खाना खा के आ रहे थे भाई। अब तक ये हुआ है कि हमें ये पता चला है कि काया जो है, काया का पूरा नाम है काया एल्ब्रिक और काया अबिस ऑर्डर के फाउंडर का बेटा है। ठीक है, दूसरी चीज़ डेंसलिफ हमें एक लोकेशन पे लेकर आया है क्योंकि उसे कुछ याद आया है कि सुमेरु के अविद्या फॉरेस्ट में एक जगह पर कुछ स्पेशल है, तो इस टाइम हम वहाँ बैठे हुए हैं। पाइमॉन क्यूट लग रही है। पाइमॉन क्यूट है यार, पता नहीं लोगों को पाइमॉन पे गुस्सा क्यों आता है, मुझे नहीं आता। आई नेवर फाउंड पाइमॉन इरिटेटिंग। So, next question. Don't know if it's okay to ask this, but Paimon's curious. What was it like traveling with your sister? Yes, यही क्वेश्चन के जवाब चाहिए अपने को। बोल बोल ट्रैवलर बोल, अपने मुंह से आवाज निकाल थोड़ी सी। Stars? यार ये बोल भी तो सकता है। Wow. Yeah, Paimon understands. Being separated without even knowing the reason why, it's just terrible. अब इसका फाउंडर कौन है? इसका काया का फादर, काया का बाप। बेटा नहीं, डिसेंडेंट नहीं, बेटा है। द सन ऑफ द फाउंडर। एक ही बात है यार, मतलब ऑलमोस्ट एक बात नहीं है, लेकिन हाँ। Paimon's your guide. Just you wait, heavenly principles, and you too to that. You know what? We've talked too long about this sad stuff. Let's talk about something happy instead, cause all right, it's getting dark, so why don't you rest? Paimon will take first watch. Don't worry, no monster's gonna come and eat you up. पाइमॉन खुश कर दिया पाइमॉन को इसलिए। Oh, come on, don't say that. Paimon just wants to look after you for once. Nighty night. Go on, shoo, off to sleep. So cute. वो मास्क वाला सीन कब आएगा भाई? अभी मुझे नहीं पता कब आएगा। चेंज कर दिया ये वाला, ये लोगो थोड़ा चेंज हो गया लोडिंग स्क्रीन वाला। Hey, time to wake up. The sun has risen. What a deep sleeper. You do know that we need to... Tear stains. You dreamed of your sibling last night, didn't you? Oh. All right. Rest here a bit longer then. I'll head into the forest to investigate. पाइमॉन कहाँ है?
हाँ भाई पाइमॉन कहाँ है भाई? यार पाइमॉन गायब हो गई, मुझे और थोड़ा सा डर सा लग रहा है यार। 200 पुल्स 1 पुल जमा हो गए मेरे, 101 जमा हो गए। कैनॉट यूज, एक मिनट, कैनॉट यूज का मतलब क्या? मैं किसी उसके अंदर हूं क्या? एम आई एम इन स्पेशल स्टोरी मोड एंड कैनॉट कंप्लीट दिस एक्शन। मैं किसी डोमेन के अंदर आ गया हूं क्या? पाइमॉन भाग गई क्या? पता नहीं यार। और मैं कुछ यूज में मैप भी नहीं खोल पा रहा। Halt! What do you think you're doing? This place is not whatever you think it is. Nor should you be poking your nose into my business. Be gone! ये तो कानरिया का बंदा है, ये तो कानरिया का ड्रेसिंग स्टाइल है। हम 500 साल पहले पहुंच गए क्या? Your travel companion? You mean the one that was keeping watch by your side last night? ये तो कानरिया का है, ये देखो इसकी आंखें भी कानरिया जैसी है, कानरिया वाली जैसी है। Your companion departed for the forest early this morning. That much I saw with my own eyes. तो ज़्यादा ही पागल है भाई ये तो। What business is that of yours, hmm? All you need to know is that I claimed this place first, and what I do here is none of your concern. ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है ज़्यादा। Do I make myself quite clear? Leave. Well, what are you waiting for? If you must, suit yourself. तो भाई तो मेंटल हॉस्पिटल से छूटा हुआ लग रहा है। I've been observing you, and you don't look like a forest ranger, nor someone from the academia. How does he know about academia and forest ranger? अगर ये कानरिया से है तो उस टाइम एग्जिस्ट करती थी academia? Still, I'm warning you, no funny business. Promise me that, and you can do as you please. Okay. Herald है ना? हाँ. Whatever. Just move aside. I think he's a herald as well. You. Oh, go on then. Have it your way. I knew I wasn't going to be able to hide this anyway. Just come in. But no overreacting to anything you see in here, okay? You understand me? Come on then. Hilly Churl? Mind your own business. And don't worry, he isn't aggressive. हाँ इकोनॉमी में मिला था हेरल्ड से, लेकिन वो बड़ा स्वीट सा था, वो तो बहुत ही प्यारा सा बंदा था। ये तो पागल सा लग रहा है। How could he be? He was too young for anything like that. So don't you lay a finger on him. Just find yourself a corner to rest if you're tired or cold. Huh? You know Conria? Who are you? Exactly. And how do you know I'm from Conria? Hilly Churls are people of Conria. ये तो मुझे पता है। Do you worship a god, traveler?
Sounds like you've had an eventful life. All right, well, my name is Ida, and you are correct. I was once Conrian. I apologize for my earlier hostility, but you must understand, as far as I'm concerned, humans who do not worship the Seven are nigh extinct. कैमरा के पीछे टेक्स्ट छुप रहा है यार, अब उसका मैं क्या ही करूं। तो मतलब डायलॉग तुम्हें सुनने पड़ेंगे थोड़े से, सॉरी। And all who place faith in the gods are my enemies. क्योंकि जो मेरा ये ओवरले है ना, ये ओवरले वेब ब्राउज़र सोर्स है, तो मैं इसको इसके अंदर मूव नहीं कर सकता। ट्राई करता हूँ मूव करने का, रुको। Wait, let me just try and move this. नहीं यार, ये मूव नहीं हो पाएगा, सॉरी। चलो एक काम करता हूँ, आई हैव अनदर ऑप्शन। फिलहाल के लिए इसको यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ कर देता हूँ, बेटर है ना। ट्रैवलर बोलेगा क्या इस क्वेस्ट में? ट्रैवलर हमेशा बोलता है इस क्वेस्ट के अंदर, इन क्वेस्ट में हमेशा बोलता है। चलो अब दिख जाएगा। That may be. But the fact is that chances to talk to people like yourself have been few and far between since the cataclysm. This wretched curse of immortality. Who knows how long I must continue to suffer like this? The curse. It was a little gift given to the people of Conria by those vile gods. We lost our home, our loved ones, everything. The agony of the cataclysm itself was already too much to bear, but then came the curse, robbing us any chance of release. All we can do is watch helplessly as our souls erode and our bodies decay. इसका वी तो पूरे फॉर्म में, हाँ, मतलब कि शो हो रहा है कि कोई इंसान अगर इमॉर्टल है, सालों से मतलब कई सौ सालों से जिंदा है, तो किस तरीके से उसका माइंड और उसकी बॉडी इरोड हो सकती है। Because although Conria began with a single bloodline, it was a home to others too. ओह अच्छा, मैं भी ये चीज़ वंडर करता था कि कुछ लोग अबिस ऑर्डर में कन्वर्ट हो गए, कुछ लोग हिली चर्च में कन्वर्ट हो गए, ऐसा क्यों हुआ? Any who forsook their gods and came to Conria were welcomed as our fellow citizens. When the cataclysm came, we pure-blood Conrians were declared the greater sinners. Upon us the gods placed the curse of immortality. But those whose ancestry belonged to the domains of other gods were punished with the curse of the wilderness as they fled, turning them into monsters. He is Caribert, my illegitimate son. ब्रो यार, ये गेम में जिन लोगों को हमें मारना होता है उनको इतनी बैक स्टोरी दे देंगे, तो अगली बार जब मैं इनको मारने पहुंचूंगा तो यार मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा।
How times have changed. I can say that out loud with no consequence now, but it was once a matter of unspeakable shame. क्या कह रहा है ये? बेसिकली ये कह रहा है कि खानरिया एज ए नेशन उन सभी लोगों को इनवाइट करता था, उन सभी लोगों को एक्सेप्ट करता था जो सेलेस्टिया और उनके जो 7 आर्कॉन्स गॉड्स हैं उनको रिजेक्ट करते थे, ठीक है? तो कुछ तो थे प्योर ब्लडेड खानरियंस, जो मतलब कि वहीं पे पैदा हुए, वहीं पले बड़े, जिनके माँ बाप खानरियंस थे. जो लोग बाहर से आए थे वो लोग खानरियन बाय नेशनैलिटी बन गए, लेकिन वो प्योर ब्लडेड खानरियंस नहीं थे. तो जब कैटेक्लिज्म हुआ तो कैटेक्लिज्म के टाइम पर जो प्योर ब्लडेड खानरियंस थे, जो कि हेरल्ड बन गए या कुछ बन गए, उनको तो इमोर्टैलिटी का कर्स मिल गया. लेकिन जो दूसरे खानरियंस थे जो बाहर से आए थे, उनको वो सारे मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट हो गए, हिलिचुअल्स. अब अबिस ऑर्डर कौन है ये नहीं पता कि अबिस ऑर्डर भी प्योर ब्लडेड थे या क्या थे. हो सकता है कि वो भी बाहर वाले हों. शिट इज डार्क, एब्सोल्युटली. I was a noble of Conria. I resented the life that my family had arranged for me. And then, one day, I met a beautiful woman amongst the people. Her roots were in Mondstadt, but that mattered not to me. It was love at first sight. Okay. Kari Bear faced great hardship from the very moment of his birth. All due to my selfish desires, and I was never able to be there by his side for any of it. And after all that, he turned into a hilichurl right before my very eyes. क्वेस्ट कैज्म या इंकानोमिया से शुरू होता है. हाँ, नहीं मतलब कि कैज्म, ये सारे पॉइंट्स हैं अलग अलग. ये क्वेस्ट तो अविद्या फॉरेस्ट से शुरू हुआ है, अगर इस क्वेस्ट की बात कर रहे हो तो. I always owed him much, and now at least I can finally be close to him. She was. We were separated. I do not wish to dwell on it. It could be worse. I suffer the pain of loss because I once had everything I could wish for. And now that I have lost almost everything, the little that remains I see with new clarity. If nothing else, at least I still have Kari Bear. Yes, that reminds me. I only returned here to check on Kari Bear, but I do have other things I wish to do. You may come with me, if you're so inclined. मुझे भी पाइमॉन की टेंशन हो रही है. 2-3 क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि मैं मैप यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा, मैं कैरेक्टर चेंज क्यों नहीं कर पा रहा, हम किसी डोमेन में हैं क्या, पाइमॉन कहाँ गई, कि हम किसी ऑल्टरनेट डायमेंशन में पहुंच गए हैं क्या. मैं एम दबा रहा हूँ, मैप खोलने के लिए ये आ रहा है. मेरे कैरेक्टर का ये सब ऑफ है. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. Over here. You can't teleport. हाँ, टेलीपोर्ट नहीं कर सकता. मैं वॉक करके जा सकता हूँ इधर उधर. It seems. I'm sure you're wondering why I brought Kari Bear here to Sumeru. Well, it's because he needs a medicine that can only be made here. One which will help him to recover his clarity of mind. I do not hope to break the curse. I am well aware of my powerlessness against the punishment of the gods. But it is said that this medicine is imbued with the power of Sumeru's god of wisdom and can awaken the mind from a state of deep stupor. It has been used in the past to treat cases of mania. Okay. I believe that it might just work. I read about it in a book.
from the Royal Library of Conria. It was banned. I mean, since this medicine requires the power of the seven to work. In my youth, I disliked the life of nobility and craved excitement. I was leafing through some forbidden text and happened upon it. कौन सा गॉड ऑफ विजडम, रुक देवता है नाहिदा? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि किसकी बात कर रहा है ये. What other choice do I have? What exactly would you have me do, huh? The gods have already punished us. What does one more sin matter now? Never mind. As long as you understand. I'm sorry. I struggle to take control of my mood sometimes. Perhaps a consequence of having lived too long. As it happens, I am in dire need of some help to make this medicine. My hands don't have the dexterity they once did. I fear they may be decaying from within. All thanks to this curse of immortality. Okay. To start with, take this ingredient. ये तो वो लग रहा है रुकशवा मशरूम. Also, do you have any of Sumeru's regional specialties on hand? I believe they're called Kalpalata lotuses and Sumeru roses. I do. Oh, wonderful. Oh, in that case, we have everything we need. This is the method for making the medicine. You just need to follow the steps. Okay. Let's craft. Earth and water, wind and fire. Craft for me what I desire. Nameless taboo medicine of the royal court. Okay. अच्छा बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं. क्या बात है. रेजिन कंडेंस कर लेता हूँ इतने लगे हाथ. पीछे पीछे जनरेट होता रहेगा ना. ओके. लेट्स गो क्राफ्ट. अच्छा मैं मैप भी नहीं खोल पा रहा अपना. आई कैन सीधा यहाँ से एग्जिट कर सकता हूँ यहाँ से मैं. बहुत स्ट्रेंज यार, वेरी स्ट्रेंज ये जो भी हो रहा है. Is it done? Oh, splendid. Let me see. In all honesty, I do not know what the end product is supposed to look like. The banned book didn't feature any illustrations. Well, the moment has finally arrived. Curses. No! We need to perform one final step to complete the medicine. I said before that this medicine relies on the power of the God of Wisdom for its restorative effects. वैसे कर सकते हैं मैप वगैरह. ये स्पेशल स्टोरी क्वेस्ट का स्टेटस है, इसके लिए वैसा सीन है. वो एग्जिट करके यू कैन डू नॉर्मल स्टफ. हाँ वो समझ गया मैं. वो आया था मैसेज कि अगर बाहर जाते तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर अगेन. पर मैं पूरा करना चाहता हूँ इसको भी. Which means we must pay a visit to a statue of the Seven. Let's go. Okay.
How can I bow before this thing? God of wisdom, look at me! I will utter no prayer, nor will I sing your praises. You and your kind destroyed my home, wrought unfathomable suffering on my compatriots, yet here I stand before you. You cannot mock me more than fate itself already has. God of wisdom, I seek not to disavow myself of the sinful blood that flows through my veins. I wish only to beseech you to have pity upon a young and unfortunate soul. Very sad यार, but knowing नाहिदा सब कुछ छोड़ के हेल्प करेगी. खानरे का लोकेशन सुना ना? हाँ, सुमेरु के अंदर ही बता रहे हैं. My son, Caribert. He was turned into a monster before he had the chance to witness anything beautiful in this world. This is no fate for a child. Very mature story. धीरे धीरे स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है यार. मतलब इंटेंस तो इसी के अंदर हो गई थी थर्ड वाले Arkhon quest में. If everything the gods have done was in order to have the impious people of Conria bow their heads, then I bow to you now. I have given up all I ever stood for. All I ask is for a tiny miracle. For Caribert to see this world once more. Please, God. I beg of you. I have made quite enough of a fool of myself for one day. Let's go. Follow the wind. Caribert? Well, we've prepared the medicine. We might as well try it. Caribert, it's me. It's your father. Caribert. अगर ये हिलेचल बोला ना नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में तो मेरा दिमाग फट जाएगा. Caribert, please say something. अगर ये खड़ा हो बोला father is that you? बहुत ही ज़्यादा I'm sorry I couldn't be at your side when you were born. And that I failed to reach you and Mama in time when you both were suffering. But I'm here now. Papa's been by my side all these years. I've never left you, not once. Are you still angry with me, Caribert? I know you're awake now. Do you not want to talk to me? I'm so sorry, Caribert. Forgive me. Please, say something, anything. Please. Please. Oh, gods above! What more do you want from me? You took everything from here, and I still bowed to you. I'd give you my very life if only you cared to take it. But you won't even let me die. अच्छी एक्टिंग कर रहा है यार. इसका जो VA है एडी का. I knew it. I should never have trusted anything that had to do with the gods. I was just deluding myself.
The gods of this world have never stood with humanity, not even for a moment. Other reasons. What do you mean? Huh? You really think so? Give up? No, never. And yes, you're right. I cannot let myself wallow in despair. वॉइस एक्टिंग स्किल तो है, सही बात है, बढ़िया एक्टिंग कर रहा है. Even if I must stay here with him for 50 years, 100, what difference does it make? I do not lack for time. Let's go. We'll make another dose. The most crucial ingredient in this medicine is the unusual mushroom, which makes things complicated, but not impossible. I grow them in that field. The details don't matter, right? Curb your curiosity and just do as I instruct. If you truly wish to help me, that is how you can do it. There is a waterfall near the statue I prayed at. I need you to collect some water from there around 2 in the afternoon. I'll be here watching Curry Bear. Once you're back, I will make some fertilizer for the mushrooms. Good. Then please head over when the time comes. Time to go. ये कौन सी केव है बे? यहाँ तो यहाँ नहीं आया पहले मैं कभी. यहाँ नहीं आया मैं पहले कभी. हमारे सिबलिंग का इन्फॉर्मेशन इरिमंसुल में कैसे है? आई हैव नो आइडिया ब्रो. हमारे सिबलिंग का इन्फॉर्मेशन इरिमंसुल में कैसे है? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं दैट इज़ द थ्योरी कि हमारा सिबलिंग जो है दे बिलोंग टू तेवात वाइल वी डोंट. Time to go. Time to go. You're back. Carabear's condition is stable. By which I mean he still isn't responding. Anyway, give me the water. I need you to stand guard here for a while. Whatever you do, don't let any forest rangers approach the house. Understand? Good. I'll be back soon. The fertilizer won't take but a moment to make. Emerge. Right now. One with nature. Cascade. What happened? Was it monsters? Oh, thank goodness you were here. I couldn't have taken them on all by myself. I'd have to hide and wait until they were gone. Oh, yes, I've got the fertilizer. The effects can take some time to kick in, so let's get on with it. Next, we pick the mushrooms and repeat the same steps as before to make another dose.
Oh, sorry. I just, after resting in this field for a while, my thoughts began to wander. I have been so very wary for many years. If only I could fall asleep here in this field and never wake up again. I do indeed. That's why it was just a fleeting thought. Thank you for your help once again. And now, for the final step. Back to the statue of the seven. बस मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि why do we have to be in a special मतलब कि जोन के अंदर हमें होने की ज़रूरत क्यों है ये क्वेस्ट करने के लिए. हम नॉर्मल ये तरीके से क्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते. वेलकम बैक प्रतीक. नॉर्मली भी तो क्वेस्ट कर सकते थे ना. या तो ये सारी चीज़ें ट्रैवलर के माइंड में हो रही हैं और रियलिटी में नहीं हो रही, या तो ये भी हो सकता है. We're here. Let's begin. Wait a moment. Hey, what was that? Cory Bear! Oh no! He must have left while we were too busy preparing the medicine to notice. Come on! We have to catch up with him! Okay, let's run behind Cory Bear. Follow the hilly churn. ये नहीं बोल रहा follow the Cory Bear. That's not Cory Bear. Right. Cory Bear's scarf was a gift I once gave to his mother. I use it now as a marker of sorts. ये filler quest जैसा लग रहा है. नहीं filler quest नहीं है bro. ये तो main quest है. My eyes must be going. How could I not recognize my own son? Ah, yes. It doesn't seem interested in us in the least. Yes. The more we know about him, the better. ए रुक जा. Did it go in here? Well, हम कहाँ पर हैं? Let's head in. ये तो वो लग रहा है क्या कहते हैं साइड में. मैप में खोल नहीं पा रहा, but this looks like the edge of chasm. chasm की edge लग रही है तो यार. What a ghastly place. Has it always existed? I swear I've never noticed it before. Huh. It looks like they're worshipping. Sometimes walking, sometimes kneeling in worship. And it appears to be in earnest. Domain के अंदर domain, हाँ वही. Inception. I've never seen anything like this in all my life. What in the world does this place conceal? Oh, there's only one way to find out. ये सब वैसा लग रहा है chasm की तरह. अरे लड़ रहे हैं तुम उससे? दोस्त लड़ने का नहीं है. मैं नहीं चाहता तुम्हें मारना. अच्छा पार्टी सेटअप यहाँ हो सकता है. सॉरी. Don't get too close. Come on out. Show them.
I'm so sorry. Let me set up my party. ये इकोनॉमी जैसा कुछ लग रहा है. इकोनॉमी जैसी वाइब नहीं आ रही मुझे यहाँ से. मुझे कैज़म जैसी वाइब आ रही है जो कैज़म में हुआ करता था. नहीं सही कह रहे हो. इकोनॉमी जैसी वाइब है. हाँ यू आर राइट. मैं यहाँ पे चेस्ट ढूंढता रहता हूँ. इन डोमेन्स के अंदर ना चेस्ट पड़ी होती है. इस किताब का डिज़ाइन बड़ा अलग लग रहा है. यहाँ नहीं जा सकते. ये क्या है? ये लग रहा है फेमिलियर. तो ये है फेमिलियर जगह. तो जहाँ इल्यूमिन से मिला था लास्ट टाइम. Is this a teleportation device? What energy is powering it? बोला भाई, फाइनली बोला. अरे गूंगा बोला. ये गूंगा बोला. इसलिए मुझे लगा इस बार क्वेस्ट इकोनॉमिया में होगा. अरे बंद हो गया. Propagate! Come on out. Right here. Scatter! Show them. Into the wind! एक बार तो बोलता जरूर है. ट्रैवलर एक बार जरूर बोलता है, लेकिन बड़ी देर बाद बोला है. Wind strider! बहुत देर बाद बोला है इस क्वेस्ट में. चेस्ट है यहाँ पे कोई या नहीं है? यहाँ कोई चेस्ट नहीं है. ये रही. ओके. हम वहां नीचे से ऊपर आए हैं ना? यस, हम नीचे थे. क्रीपी. वहां ऊपर जाना है. ओके. ये स्टैचू किसके बने हुए हैं? इन स्टैचूज की शक्ल थोड़ी टूटी टूटी सी है. इन स्टैचूज की शक्ल थोड़ी टूटी टूटी है. Propagate! The wind knows it. Pick up. वो पिकअप करना है, पर वहां के लिए कैसे जाएं? यहाँ से ऊपर. ये भी बंद पड़ा है. अंदर चेस्ट है एक. डोमेन तो मस्त बनाया है.
वहाँ सामने जाना है बट अभी जा नहीं सकते, तो यहाँ सामने चलते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। How did I get on the ceiling? Did the room turn upside down? Or gravity itself? बड़ा बोल रहा है तू, हैं? बहुत बोल रहा है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, हैं? अब तेरी आवाज निकल आई, पाइमॉन ने तेरी आवाज निकल आई, हैं? खुल गया सिम। यहाँ भी है कुछ? यहाँ कुछ नहीं है, अब वापस वहीं से जाना है। Oh. It seems like I need to find a place to insert the rune. पैसा वसूल हो गया लगता है इन लोगों का, जितनी इन्होंने वॉइस एक्टिंग करानी थी ट्रैवलर से एक ही क्वेस्ट में करा ली। डोंट टेल मी हम खानरिया जा रहे हैं। लग तो वही रहा है। Herald. Halt, humans! Fate has not granted you the right to enter this place. Do you insist on an audience? Very well. And I grant you the trial of destiny. बहुत बोला है इस बार ये, हाँ। Germinate! One with nature. Right now. Right here. Nothing lasts forever. Into the wind. Propagate! Clouds high. Birds pop! Mind the deluge. Emerge. Right here. Emerge. Right now. Right here. Still. Propagate! The wind knows it. Cascade. This is getting interesting. Scatter! Right now. Right here. Spring forth! Right now. Emerge. Who was that? He was a perfect being. I'm in awe. He had the most wondrous aura, a perilous yet beautiful power. Oh, truly mesmerizing. Okay. And yet, you were able to defeat him. Oh, yours. Let's continue on.
I find myself growing more curious by the second and Me too. more excited. Me too. Any hidden chest यहाँ पे? No. Nope, no hidden chest. अरे हमारा कामी सातो आया तो यार फूड मैंने प्रिपेयर नहीं किया हुआ यार फूड मुझे बना के रखना पड़ेगा कोई हीलर भी नहीं है ना मेरे पास इस टीम के अंदर वैसे बहुत अजीब बात है कि ट्रैवलर अब तक ये नहीं सोच रहा कि पाइमॉन कहाँ गई I think we've made it to the end. अभी क्या हुआ भाई तुम देख क्यों नहीं रहे तुम्हारे लिए तो मैंने लेट स्टार्ट की थी क्वेस्ट और तुम ही नहीं देख रहे ये वो गेट है जो टीसी गेमर बोल रहा था अरे यार अब ये वाला गेट जो है धीरे धीरे खुल रहा है क्या ही फर्क पड़ता है मैंने तो नोटिस भी नहीं किया Oh, dear creature, why do you bow down? For fear of the unknown? Or for power that you covet? Oh, dear creature, why do you bow down? For I am no god, I am but a sinner. You are like a flower, born in sin, yet pure, spotless. I know your fate well. ये आवाज इसके सर में आ रही है वहां से नहीं आ रही स्टैचू से नहीं आ रही You need no longer hold back your resentment, nor accept the countless lies. Go forth, become a transcendent one. Rise beyond the fate bestowed upon you. सिनर क्या होता है पापी मैक्सिकन पापी नहीं हिंदी वाला पापी And I shall shed a tear at the end of time, as I gaze back upon your life. What just happened? When I saw that thing, my heart was instantly at peace. I was overcome by a sense of awe or joy, perhaps. I feel good. In fact, I feel better than I did before I came in here. How peculiar. Oh, is that so? All right, as you wish. सीधा घर ही पहुंच गए Caribert! Oh, thank goodness!
he's still okay. I have a strange feeling that what just happened was meant to be. शायद इसको थोड़ी सी पावर मिली है इसके बेटे कारीगर को थोड़ा सा ठीक करने के लिए. यस, तो वही कह रहा है. For this to happen, right at the moment when I was dreading worshipping at a statue of the Seven, it's as if fate was calling to me. You say that I bowed before that thing, so perhaps it might be just as effective. I have to try. No matter what, you said it yourself. I have to exhaust all options. Kari Bear. Don't tell me. उठ गया. भाई एक हिली चल के मुंह से ऐसी आवाज सुन के मुझे बड़ा अजीब लग रहा है. बच्ची ऐसी आवाज आ रही है उसके मुंह से. नहीं, मतलब मैं ना कनेक्ट नहीं कर पा रहा. एक हिली चर्ल को जिसको शुरुआत से मैंने मीसा मोरी दादा मौसी पुपू कहते हुए सुना हो, उसके मुंह से अचानक से बच्ची ऐसी आवाज निकले. फक नो. नहीं. पापा. अबे जे क्या हो रहा है भाई? आज के बाद हम हिलीचर्स को मारेंगे कैसे? पापा? Kari Bear! Oh, my goodness, it worked! It's a miracle! Oh, Kari Bear! I am my stunned. dear son! I am stunned. Bro. You see? It worked! Kari Bear can speak again! Where's Mama? एक मिनट, कहीं मैं तो सपना नहीं देख रहा. होल्ड. नहीं भाई, मैं सपना नहीं देख रहा, मैं जगा हुआ हूं. Mama is Kari Bear, look at me. मुझे नीना की याद आ गई फुल मेटल अल्केमिस्ट. Do you know who I am? अभी तो बोला तेरे को पापा, और कैसे बोलेगा? Of course. Your papa. What the fuck? No. भाई मैं बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ. मुझे मतलब कि ये चीज़ बिल्कुल, मतलब मेरी बॉडी रिजेक्ट कर रही है इस सीन को, पता नहीं क्यों. मेरा माइंड और मेरी बॉडी ना रिजेक्ट कर रही है. मेरा इम्यून सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है इस सीन को. Yes. Salvation! Sweet salvation! Yes, this is what this feeling is. छोटा बच्चा, exactly. How do you feel, Kari Bear? Are you fully awake now? Yes. It feels like I just woke up from a long, long sleep. I dreamed that I was hiding in a little room. I didn't dare go out the whole time, and I didn't want to either. Wait. My body! What happened to me? Is this me? Papa? What's happened to me? Bro, ये तो मेरा breaking my heart. Don't panic, son. It's just while you were sleeping, we went into a fairy tale world. There's no more Conria here, no more home. But do you know what that means? No more red sky, no more end of the world. In this world, you have to be a little monster, but you get to stay with Papa forever. Am I dead? No, of course not. Look, Kari Bear, you still have Mama's scarf on your arm.
That means she's watching over you, protecting you. So how could you be dead? Really? Yes, really. You've only just woken up, and this must all be very confusing for you. Just rest here for now. Things will get better. Oh, and you have to promise me something. Never take off your mask. एक ये भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि हिलिचल्स मास्क के पीछे कैसे लगते हैं देखने में. बेसिकली एक थ्योरी है कि हिलिचल्स अपना मास्क इसलिए नहीं उतारते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू सी देमसेल्व्स कि वो क्या बन गए हैं. Understand? Whatever happens, you mustn't take it off. Okay, Papa. I won't. I promise. What the fuck? Not since that day have I been so glad as I am now. I can't believe this is really happening. I knew that placing my hope in the Seven was a waste of time. I even worshipped at one of their statues like a common fool. Never before have I humiliated myself like that. Once a murderer, always a murderer. I was naive to think that the gods who conspired against us would ever offer redemption. But the god we saw in that cave, now that was a truly mighty god. Nothing like one of the Seven. That wondrous power, it was truly enchanting. Surely that must have been the reason I bowed down. वो कौन था यही तो नहीं पता. Now then, after one besieges a god, and the god responds by answering their prayers, should they, do something to show their devotion? लास्ट में अबिस की पावर ने हेल्प करी इसकी वही. Piety is hardly my area of expertise. But surely I should honor the god that has honored my wishes. A sinner? Oh, don't be absurd. You don't know a single thing about him. How dare you utter such blasphemy? You and I have both witnessed his divine power. When has the Seven worked a miracle like this before? Never! He is a god, mightier than they, and yet you would call him a sinner. Oh, preposterous! उसके पास इतना पावर है तो वो सारे हिलिचल्स को ठीक कर सकता है. हो सकता है बेवकूफ़ बना रहा हो सकता है कि उसके पास सिर्फ एक को ही इतनी पावर ना हो. No matter. Believe what you will. You cannot shake my faith. I am going to pay my respects with or without you. दोबारा से एंटर करना केव में. तो कुछ देखे भी नहीं गए तो. अननोन सैंक्चुरी. लेट्स सी अब क्या होता है. पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही डोमेन में हम दूसरी बार एंटर कर रहे हैं. यूजुअली डोमेन से बाहर निकलते दोबारा एंटर नहीं करते हम वहाँ पे.
ये परमानेंटली चेंज क्यों नहीं हो रहा बे? Propagate! Come on out. Into the wind. अब इस फटुई अच्छे ही होंगे लास्ट में उनके पीओवी के हिसाब से। हाँ, लास्ट में यही होगा कि धीरे धीरे जैसे हिलीचल्स को के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगी, अबिस और इनके बारे में पता लगेगा कि एक्चुअली में वी वर द बैड गाइज ऑल अलोंग। स्टार्टिंग से हम ही थे। Right here. Emerge. Right now. कि हम एक्चुअली में बुरे लोगों का साथ दे रहे थे। गायब हो गया। What happened? The Hilichurl worshippers have disappeared too. पता लगा हम ही विलन है तेवात के। Was it all an illusion? That's true. Yes, it can't have been an illusion. I still feel that awesome and wondrous power flowing through my mind and body. It was neither illusion nor coincidence, and certainly no dream. It was a wonder. Yes, a divine wonder. Let's go, traveler. There is surely a reason for its disappearance, and I do believe that someday in the future we shall see it again. Could he really have been a sinner and not a god? हम नहीं, पाइमॉन विलन है। पाइमॉन इज मैनिपुलेटिंग अस। पाइमॉन गई कहाँ? इसने अब तक एक बार भी नहीं पूछा पाइमॉन कहाँ गई। Cory Bear? Where has he gone? मुझे लग ही रहा था। Oh, no. Maybe someone else came by and found him? No, it can't have been that. There's no sign of a break-in and no sign of anyone having been here. This does not bode well. What if he's spotted by a forest ranger or an adventurer in his current state? Wait a minute. This isn't how we left it. Oh no. Did he? ओह, उसने अपना मास्क उतार के देख लिया, इसलिए वो शीशा टूटा हुआ था कि वो शीशा था प्रॉपर और वो शीशा टूट गया। हम क्या पास्ट में है? हम पास्ट के इवेंट्स को देख रहे हैं। The mirror, it's broken. वही एग्जैक्टली। He must have taken his mask off and seen what he looks like beneath it. If he'd just done as he was told. We have to find him. हम पास्ट में हैं। It's his scarf. He dropped it. Looks like we're going the right way. Oh. Come on. स्कार्फ ड्रॉप कर दिया। हमें भी नहीं पता लगेगा कि हिलीचल्स में से कौन सा इसका बेटा है। Unless he speaks. Time to go. Cory Bear! Cory Bear! Where are you? Curses! Forest rangers. Hey! Who are you? We haven't seen you around here before. What's your business here? ये तो राना जैसी लग रही है देखने में। Have you seen a Hilichurl? A Hilichurl should have come past this way. Have you seen it? I asked you first.
Don't make this more difficult than it needs to be. I said, have you seen a hilly churl? Hey, whoa. Look, sir, there's no need to get so worked up. There are hilly churls everywhere. What's the big deal? जब से We सुमेरु see आए plenty हैं of them out here. जब से सुमेरु आए हैं टाइम ट्रैवल ही हो रहा है कभी किसी डोमेन में घुस जाते हैं कभी किसी डोमेन में घुस जाते हैं Exactly. Matter of fact, we just took out a few of them back there. Those dumb boneheads. You forest ranger scum! You spawn of the seven are all the same! I'll have your heads if you so much as laid a finger on Curry Bear! You're raving mad! You've got some gall coming here to our nation insulting the forest rangers! Curse you all, forest rangers! I don't get it. Why make such a huge fuss over a few hilly churls? Makes no sense. He'd only just regained his mind. How could you do this to him? So tell me, forest rangers, did you really spare none of them? Did you really take out every last hilly churl you saw? भाग गया हो सकता है Jeez, you're really not gonna let this go. Fine, you weirdo. If you must know, I happened to cross paths with a solitary hilly churl when I left the team to, use the toilet. I was frightened at first, but it didn't seem to have any interest in me at all. It was just bumbling along in that direction. So I left... Yes! Wonderful! Wonderful! Let's go! We have to find him! Wait, you're leaving? Not even a thanks for the info, goodbye? ये तो राणा जैसी लग रही है Time to go. वो रहा कूद मत जाइयो भाई मेरे Curry Bear! Curry Bear, stop! It's me! It's Papa! Whatever you saw, it was all a trick. An illusion. I told you, we're in a fairy tale world now. Nothing here is real. Hint. Please, Curry Bear, come back. It's time to go back. Curry Bear? दवाई का असर उतर गया How could this happen? He regained his mind. He must be able to hear me. Surely. Come, Curry Bear. We have to go home now. Papa's here to take you home, all right? Bro. Papa. Curry Bear. Papa, I can't take it. Please, Curry Bear. It's my fault. I'm so sorry. If only I'd known. It's all too much. Papa! I see. I understand now. Finally, it all makes sense. Ah, traveler, you're awake. Finally, we can rejoice together. गेम भी तो अपना मुखड़ा दिखाओ हाँ यार मैं भी देखना चाहता था क्या उसके मास्क के पीछे था Wait, no. Why am I still calling you traveler? Oh, I have known your true identity for some time now. I suspected it was you from the beginning. I had to talk to you to be sure.
Oh, of course you haven't. With your status, you can hardly be expected to know all of us. In any case, I've been using a fake name this entire time. Ida is the name of a servant I once had. My real name is Clotar. Clotar Alberich. I have no words. ये काया का बाप है और वो हिलीचल काया का भाई. You saw it too, didn't you? Unmistakable, the power inside Caribert and the power of the one you call a sinner. It was one and the same. भाई मेरा भी दिमाग फटने वाला है. I am positive now. It's the power of the abyss, isn't it? Oh, at long last, I have seen it with my own eyes. That is no business of yours. A sinner. Yes, salvation for a sinner can only come from a sinner. Caribert did not deserve his fate, but now it's wonderful. He will be able to weave his own destiny anew. Born into abject sorrow, he shall now become the loom of fate. हैं? ये पागलों जैसे क्यों हंस रहा है? क्योंकि ये 500 साल से ज़्यादा जिंदा है. Sinister. Dangerous. Oh, I never imagined that you, of all people, would deny the abyss. How ridiculous! ये हमें इसकी बहन के साथ कंफ्यूज कर रहा है क्या? We once believed that you would bring new strength and hope to Conria. To us, you were the abyss. A wondrous mystery far beyond our imagination and comprehension. And the one who controls the abyss can control everything. We yearned for that future. We looked to you to take us there. But what did you bring us instead? Oh, Princess of Conria. हैं? प्रिंसेस? ये बंदा है ये. हो क्या रहा है भाई? हो क्या रहा है? Why did he just call me? Traveler! You're awake! Oh, thank goodness you're awake!
मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी थ्योरी ये है कि ये जब डेंसलिफ आया था ना इसको उठाने के लिए कि तुम सो रहे हो, ये बिल्कुल शायद पास्ट में था जब डेंसलिफ और ट्रैवलर इसकी बहन साथ में ट्रैवल किया करते थे। आई थिंक हमारे मेल ट्रैवलर ने अभी अभी अपनी बहन की ज़िंदगी का एक पोर्शन जिया है कि ये इसकी बहन के साथ हुआ था एंड ही लिव्ड दैट पार्ट अभी। भाई कुछ ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आ गए। What happened while you were unconscious? हाँ, ट्विन का मेमोरी देखा सपने के अंदर। मेमोरी देखा ही नहीं, उस मेमोरी को जिया वो। अभी क्या हुआ समझाना प्लीज़ भाई, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ क्या हुआ अभी। मैं बेस्ट मेरी एबिलिटी का मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब ट्रैवलर सोया तो वो एक तरीके से टेलीपोर्ट कर गया पास्ट में, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब डेंसलिफ और ये साथ में ट्रैवल किया करते थे, इसकी बहन और ये साथ में ट्रैवल किया करते थे, और इस मोमेंट के ऊपर यहाँ पे ये इंसिडेंट इसकी बहन के साथ हुआ था एंड इसने ये पूरी की पूरी मेमोरी ना सिर्फ देखी बर इस मेमोरी को जिया भी। I checked the ley lines nearby. It appears that the Abyss tampered with them, and they've been in turmoil ever since. Information and memories flow within the ley lines. What did you witness? Ley line disorder. You mean Clotar Alberich? After founding the Abyss Order, his faith in the Abyss led him to do a great many things. But the curse of immortality continued to torment his body and mind. And in the end, neither his faith nor the Abyss he worshipped could save him. After 100 years, he lost his mind completely and was never seen again. Yet his dark legacy lived on. The defiled statue that we encountered previously was just one perverse product of his use of abyssal power during his life. You could say that. She wouldn't be the Abyss Order's princess otherwise. Are you alright? You have a troubled look on your face. What happened? So you saw her memories from centuries ago, through your own eyes. It all but defies belief. भाई मेरा भी दिमाग फट रहा है। ये वाली जो क्वेस्ट होती है ना, डेंसलिफ वाली जो क्वेस्ट होती है, दे आर ऑलवेज माइंड ब्लोइंग, दिमाग फाड़ने वाली होती है। आर्कॉन क्वेस्ट इनके सेकंड ही मैं समझूंगा। Still, as I'd suspected, the notion of the Loom of Fate did indeed rear its head during that time. And it seems closely connected to Clotar Alberich's son, Caribert, and what happened to him. वो ये कैरीबेयर ही तो नहीं कहीं जो काया बन गया आगे जाके? कैरीबेयर, काया। And yet your sister never breathed a word of this incident to me. I wonder, was that the moment that she decided to go down this path? Indeed. Clearly this series of events sparked a long period of deep contemplation. This was where it all began. What is it? The field? What does that have to do with anything? You mean here? Well, let's start digging and see. You scared the Duke out of Paimon! Did you rebury them yet? A male and female skeleton, buried together. What? Interestingly, the male skeleton appears to have been interred much later, and it's holding a silk scarf in its hand. मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं अपने सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करूँ। सिल्क स्कार्फ तो वो
क्लोथार था या उसका बेटा कैरिबियर था? But what does this mean? And how did you know that there were bodies buried here? What? That's impossible. Unless Clotar Albery finally found a way to rid himself of the curse. This all raises far too many questions. I need time to think, and to search my memories for some missing pieces. We should part ways here. Huh? You're just gonna leave? Why? You could come with us, you know. It's better that we split up for now. I think that he might have seen you. उसकी मॉम और उसका होगा, पर मॉम दो बॉडी से दूसरी कहाँ से सकती है? एक फीमेल स्केलेटन बोल रहा है, कैरिबियर तो हो नहीं सकता. Who's he? Yes. I have my suspicions as to his identity, but I need to confirm some other details before I can be sure. अब अगला क्वेस्ट अगले साल आएगा, बिल्कुल जब फाउंटेन पूरा खत्म हो जाएगा ना, तब आएगा अगला क्वेस्ट. If the time is right, I will tell you when we next meet. But what do you mean that he saw the traveler? How is that possible? I fear that while these things would limit anyone else, they are no obstacle to him. What? Why? What is he? All right, let's leave it there. Get some rest. Goodbye. डेन जब भी आया सबकी फाड़ दी है. Exactly. There goes Dane. And just like that, it's back to being the two of us again, huh? What is it? Huh? Hug? मुझे लगा पाइमन को पप्पी करने वाला ही है. इस बार भी सिबलिंग रीयूनाइटेड नहीं हुए. वो तो लास्ट तक नहीं होंगे, जब तक गेम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक नहीं होंगे. There's still a long road ahead. कह रहा ना, there's still a long road ahead. Time to go. लो जी, फाइनली कैरिबियर हो गया. हाँ, छोटी क्वेस्ट थी यार, लेकिन छोटी क्वेस्ट थी. काश थोड़ी सी और लंबी होती. वो जगह कहाँ थी? लेट्स गो टू दैट प्लेस. वो जगह थी ना जहाँ पे अंदर गया था. वो कहाँ थी? यहाँ. क्वेस्ट अच्छा था, नो डाउट अच्छा था, बहुत बढ़िया था. बहुत इंफॉर्मेशन डंप हुई. और हमारा जो कैरिबियर था वो इस पहाड़ी के ऊपर जाके फटा एक तरीके से. अब जरा क्वेस्ट समझाना प्लीज. कहाँ से स्टार्ट करूँ? Where do I start? स्टार्टिंग में हमें पता चला कि अबिस ऑर्डर का जो फाउंडर है उसका नाम है एल्बरिक. सरनेम उसका एल्बरिक है, ठीक है. और हमें पता चला कि काया जो है उसका डिसेंडेंट है.
Right here. Right now. The wind knows me. ठीक है, फिर हमें डेन्सलेफ मिला। फिर डेन्सलेफ के साथ हम एक ऐसे घर में गए कि डेन्सलेफ को अपनी पुरानी मेमोरी से कुछ याद आया। डेन्सलेफ को कुछ याद आया लूम ऑफ फेट के बारे में। तो उसको इन्वेस्टिगेट करने हम इस घर पे आए, और इस घर में आने के बाद हमें पता चला, हम सो गए, घर में हमें कुछ मिला नहीं, टूटा हुआ मिरर मिला। और जो हमारा कैरेक्टर ट्रैवलर जब सोया तो वो पास्ट में पहुंच गया, और उसने अपनी बहन की मेमोरीज देखी। और एक मेमोरी में क्या था कि उसने जो फाउंडर था इस ऑर्डर का, उसकी मदद की। ओ, तो ये रास्ता सीधा कैज़म में जा रहा है। ये रास्ता सीधा कैज़म में जा रहा है। यहां पर था वो रास्ता दूसरी जगह जाने का, और हम ये सीधा कैज़म में जा रहे हैं। बज गया म्यूजिक कैज़म का। राइट, वी आर इन द कैज़म। टाइम टू गो। मतलब कैज़म और अबिस ऑर्डर का कुछ तो लेना देना है, कुछ तो नाता है। अबिस रीसेट हुआ है। हाँ, अबिस रीसेट हो गया, वहां भी चलते हैं हम अभी। ब्रो, रियली नाइस। क्वेस्ट होगी खत्म? यस, क्वेस्ट ओवर। और हम सब के दिमाग की फटके हो गई 4। ये वाला क्लिफहैंगर कुछ ज़्यादा ही गंदा था। सही बात है, आई एग्री। दिस वॉज अ बैड क्लिफहैंगर। स्टोरी क्वेस्ट करेंगे कल। दिया की स्टोरी क्वेस्ट कल होगी, आज नहीं। अनलॉक कर लेते हैं इसे। This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. काया इज इक्वल टू कैलिबेर। मेरी भी यही थ्योरी है कि काया जो है वो कैलिबेर है, जो कि इंसान बन गया प्रॉपर तरीके से। यार ये तो अगली बार जब क्वेस्ट आएगी ना तभी पता चलेगा, जब नेक्स्ट टाइम आएगी। चलो आज की डेली क्वेस्ट करते हैं। आज की डेलीज रह गई। भाई देख रहे हो कितना सारा एरिया यहाँ पर पड़ा हुआ है पेंडिंग। इमेजिन कितना सारा यहाँ पड़ा हुआ है अभी। बुक में से 1 पुल ले लो। ले लिया, आई गॉट द पुल। सारे ले लिए, 20 के 20। ठीक है, आगे ना सारे ये रहे। आई गॉट एवरीथिंग। ये रहा, हो गया। अभी 2 और रह गए। ये बेचारे घूम रहे, अब इनको मारने का मन नहीं करता मेरा।
दिया इज गुड बाय द वे भाई, यू आर द फर्स्ट वन जिसने ये बात बोली है जब से मैंने स्ट्रीम स्टार्ट की है. Kamisato up. Suiyu. One with nature. ब्रो गेंशिन इम्पैक्ट का साइज कितना है पीसी में? हाँ 50-60 GB का राउंड है. कोई 50 कहता है, कोई 36 कहता है. भाई इंस्टॉल करके देख लो, पता चल जाएगा. रुको मैं देखता हूँ. $55 GB है मेरे पीसी के अंदर. लो अल्ट्रा डिड यू पुल एंड यूज हर, इफ नॉट डोंट टॉक. यार हमने अभी ना क्या कहते हैं बहुत एक्सटेंसिवली बैठ के दिया का सारा देखा हिसाब किताब, एंड शी इज नॉट इम्प्रेसिव. हर नंबर्स आर नॉट इम्प्रेसिव. सीधी सी बात है. Germinate! The wind knows me. Right here, right now, right here. Scatter! Emerge. ये तो आते ही गया. One with nature. Show them. एक्सट्रैक्ट करने के बाद बढ़ता है. एक्सट्रैक्ट करने का बढ़ता नहीं है, ये एक्सट्रैक्टेड ही है. दिस इज एक्सट्रैक्टेड ओनली. फन है. दिया इज फन टू प्ले, नो डाउट. दिया इज फन टू प्ले. If this rain keeps up, my fur. Wind strider. उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. खेलने मजा आता है, लेकिन अगर डैमेज ना दे तो कोई फायदा नहीं. शिंगचो की ई, येलान का बर्स, शिंगचो का बर्स, उससे आप यूज ही नहीं कर सकते. Fallen leaves, adorn my night! Into the wind! Right here, right now. The wind knows me. They need to fix that. हाँ, बर्स के साथ अगर यूज़ करना हो तो बर्स के साथ यूज़ किया जाए तो ही फायदा है. I love it when it snows. The world falls completely silent. इससे बात करनी है टॉमी से. एक मिनट पहले इसका काम करते हैं जरा पूरा हम. Emerge, right now. Emerge. Scatter!
with nature. Right here. Emerge. वाह चले The wind knows it. हाँ ऊपर ऊपर खड़ी आती है वॉलेंसी ने वीडियो डाला था 1 HP दिया वर्सेस राइडन अब शील्ड में ढूंढो इसके लिए मैं कितनी लंबी क्वेस्ट है बे और एटलीस्ट मेक इट अ कॉन्स की अल्ट अटैक्स ऑफ विल काउंट एज नॉर्मल अटैक्स ताकि शिंगचू एंड येलान का बर्स्ट ट्रिगर हो सके हाँ सही है लेकिन अगर नॉर्मल अटैक की तरह काउंट होगा तो उसकी स्केलिंग भी नॉर्मल अटैक वाली होगी बर्स्ट वाली स्केलिंग काउंट नहीं होगी फिर उसकी वो भी प्रॉब्लम है ना Let's get out there and make some friends. Check this out! Right here. Done. चलो डेली कमीशन लेते हैं और आज के लिए बंद करते हैं अभी के लिए यार रात को ना पता नहीं स्ट्रीम करने आ नहीं पाता रोज शाम को मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो जाती है मैं सोचता हूँ आके स्ट्रीम स्टार्ट करूँ बट मेरा इतना डाउन होता है दिमाग उस टाइम पे ये क्या ही बताऊं पर आज करूंगा यार मैं कह रहा हूं कि उसकी बर्स्ट के अटैक को तुम नॉर्मल अटैक कंसिडर कर सकते हो लेकिन नॉर्मल अटैक की फिर स्केलिंग भी उतनी होनी चाहिए गॉड ओवर आगे बढ़ानी है एग्जैक्टली यार अब इस यार कल करेंगे ठीक है अभी जो मैंने ये किया ना
क्वेस्ट की है, मेरे दिमाग से भी उतर नहीं रही है। ठीक है, GTA में हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखना है। एग्जैक्टली ठीक है, तो चलो यारो, ठीक है, रात को मिलते हैं। ठीक है, चलो लेट्स मीट टुनाइट। चलो यार, बाय, टेक केयर। ठीक है, मिलते हैं रात को।